And even wherever the CRC are there, we are getting the reports. One proposal before the government. Let the proposals come. After that, we will see whether it is essential or not, sir. Thank you. माननीय प्रसन्न आचार्य जी. Sir, as this question relates to persons with disabilities, whom we call in a very honourable way the Dibhyangajana, I would like to know from the Honourable Minister whether any study or assessment has been made to know how many Dibyangajanas are in the country who are qualified and capable of seeking jobs and who are seeking jobs in government and private sector. Whether government will consider to increase the percentage of reservation for these Dibyangajan in the government sector and the private sector as well, so that these qualified Dibyangajan can get jobs as per their qualifications. Thank you. Sir, in the country, we have made a census in 2011. There is 2,68,14,994 Divyangajan is there. With regarding male, 1,49,593 males are there. Females are there, 1,18,26,401, sir. But what I must know, there is earlier, there was only disabled, sir, included only the 7, sir. Only 7 earlier. After that, we made an act on 2016, the range of disabilities. We included nearly 21 disabilities for this disability program, sir. But we have increased this reservation policy from 3% to 4% reservation in the employment as well in the private sector also, sir. We are looking, we have no any statistics from there, sir. Thank you. Mr. KJ Alphonse. So I would like to know from the Honourable Minister whether they would be able, government would be able to provide free artificial limbs to all those who are required. There are a very large number of people who, if it is provided, sir, they could have a life. Thank you. Sir, Honourable Member, it's a good question he has made, sir. Under ADIP scheme, grants in aid from 7 years, we have spent nearly 1,311 crores was utilized during the last 7 years. Current year benefited nearly 21,59,000 lakh people were benefited, sir. Now, we have made the camps of nearly 11,505 camps we have attended, sir. Out of these mega camps, one campus in Gwalior was graced by the Honourable President and 5 camps were graced by the Honourable Prime Minister at the Varanasi, Navsari, Vadodara, Rajkot and Prayanjan, sir. We have made some special operations for the Divyangas, sir. Kohilar implement nearly 3,965. We have made an operation, sir. It is for this, here in this speech, sir. This is from the help of this CSR fund, sir. Motorized tricycles are there, sir. We have given 27,028 motorized tricycles, sir, we have given in the country, sir. At the same time, there is so many programs, camps, sir, we have conducted, sir. Scheme of the Assistance with Disabilities Persons for the purchase. There are 6 production units of the artificial Honourable limbs. Minister, please reply briefly because Yes, others can get sir, opportunity. this is very helpful to the handicapped, sir, disabled, sir. This Yes, is, I know. Nobody is there to convey the minister to had aids and assistance for their constituency, sir. This Alamco is there. It is, we have got the manufacturing units, sir. The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India is the country such as in Kanpur, Bangalore, Bhubaneswar, Ujjaini, Jabalpur, Mahali, and Alchem is producing over there 350 different types of aids and appliances in the Divyangas, sir. The quality of these products are second to the. Please be brief now. Do not. We cannot always. Please be brief. Please be brief. Thank you. माननीय सदस्यगण, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से मेंबर्स बार बार कहते हैं हमारे क्वेश्चंस नहीं आए। माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यों दोनों से आग्रह है कि अगर ब्रीफली आप पूछेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को अपॉर्चुनिटी होगा। अगर माननीय मंत्रियों को विस्तार से डाटा देना है तो संबंधित व्यक्ति को भेज दें। माननीय श्री नीरज शेखर जी, क्वेश्चन नंबर 78। प्रश्न संख्या 78। माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है
कि इस प्रश्न में आप भी एसोसिएट करिएगा, मैं चाहूंगा। माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, मैं पहले बधाई देना चाहूंगा। मैं फिर लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि हम नेशनल हाईवे 4 लेन कर रहे हैं और ग्रीन फील्ड भी बना रहे हैं। इसका मैं चाहूंगा एक स्पष्टीकरण आ जाए कि ग्रीन फील्ड भी बन रहा है कि जो वर्तमान नेशनल हाईवे 31 है, जो गाजीपुर से माझी घाट तक है, उसको 4 लेन कर रहे हैं हम लोग, और ग्रीन एक्सप्रेस भी बन रहा है। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने जो कहा है कि इसमें जो दिया है कब तक काम शुरू हुआ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था और अब 2022 है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी स्पष्ट हो जाए कब काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ और बड़े बड़े गड्ढे हैं उस नेशनल हाईवे में। सर, ये जो रोड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एक पुराना रोड है जिसके बारे में माननीय सदस्य की सक्रियता से उसके ऊपर तकरीबन 81 करोड़ का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि वो रोड काफी खराब हालत में थी। उसके बाद इस चीज के ऊपर विचार किया गया कि क्या इस रोड के अलावा हम एक छोटी रोड बना सकते हैं जो उसका रास्ता थोड़ा छोटा हो। इसलिए एक नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बन रहा है जो कि शुरू होकर गंगा पार करके जाएगा और इसके अंदर एक स्पर दिया गया है जो कि बक्सर तक जाएगा। ये जो रोड जो नया जो हमारा 4 लेनिंग है गाजीपुर से बलिया और यूपी बिहार बॉर्डर तक, इसमें डीपीआर बन चुकी है, 4 लेन का रोड होगा और इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो रहा है क्योंकि डीपीआर इसकी बन चुकी है। इसके अंदर एक चीज के लिए लैंड रिक्वायरमेंट जो है 3A हो चुका है, 3D होना बाकी है। हम 3D इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी के साथ जा रहा था, तो दोनों के बीच में तालमेल करने के लिए, ताकि सरकार का पैसा एक ही जगह पर लगे, एक ही अलाइनमेंट के अंदर 2 रोडों का कोई फायदा नहीं था, इसलिए थोड़ी सी उसमें देरी है। जहां तक प्लीज do not talk like this. You are not supposed to talk like this, Mr. Please reply. दूसरा जो कि पुराना जो कि हमारा नेशनल हाईवे 31 है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया 130 किलोमीटर का है और तकरीबन 81 करोड़ रुपया इस पर सैंक्शन हो चुका है, काम चालू। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय नीरज जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा रिविलगंज में बाईपास बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं, खुद आपने अनुभव किया होगा बलिया शहर में जहां आवश्यकता है बाईपास की, क्योंकि इसका भी वहां पे उन्होंने कहा था माननीय मंत्री जी ने कि बाईपास बनेगा, क्योंकि आज के दिन रोजाना वहां पर जाम जैसी स्थिति पूरे दिन बनी रहती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बलिया में भी बाईपास बनेगा क्या? सर, जो पहला इनका सवाल था कि क्या दोनों रोड बन रहे हैं, उसका उत्तर है दोनों बन रहे हैं। ग्रीन फील्ड भी बन रहा है, पुराने वाले को ठीक किया जा रहा है। दूसरी चीज जो कि जहां तक बलिया का सवाल है, पहले प्रपोजल था कि बलिया के अंदर एक ओवरब्रिज दिया जाए, एलिवेटेड सेक्शन दिया जाए, उसके लिए वहां पर स्थान कम है, इसलिए बाईपास का प्रावधान है। साथ ही आगे जाकर रेवलगंज का बाईपास भी बनेगा ताकि शहर को बाईपास करके हम उसको आगे रोड से मिला सकें और उसको आगे हाजीपुर तक ले जा सकें। बलिया के कंजेशन के लिए जरूरी था कि इसमें बाईपास बने, वो बाईपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का बनेगा। धन्यवाद। माननीय एम सन्मुगम जी, क्वेश्चन रिलेट्स टू NH of Gazipur to Hajipur. Your question is related to this, then you can ask. Sir, Please. I want to ask Please. a question Please. regarding the national highways. It's related to Gazipur to Hajipur, sir. Sir, I want to ask the position of the Tamil Nadu. रामिला Tamil विचार Nadu, भाई, sir. रामिला विचार भाई, 12. It is a national highway, रामिला विचार भाई sir. 12.
Sir, he is not asking about Tamil Nadu. He wants to ask question about. Sir, this question relates to Gazipur to Hajipur. I have made it clear. I am asking and this is the national convention and rule of the I am House. asking Please, national highways, sir. please. What is the Shri progress of Kanak the... Medla Ravindra Kumar, your question Gazipur to Hajipur. No, my lord, regard to highways. Come to the next question. Ask on the next question, I'll give you opportunity. Question number 80, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. Dr. Vinay Sahasrabuddhe, please. Question number 80. Question number 80. Sir, statement is laid on the table of the House. Question number 80. It's for 16.7.3. Question, Mani Mantri ji. Sir, the answer. First supplementary. Yeah, that is what I'm saying. So the answer very clearly shows that for whatever the reason, but the polytechnics and ITIs in Maharashtra who were provided with a huge amount of financial support. It's postponed, already postponed, coming on 16.3. It's mentioned. Sir, the member has requested that he will be present on 16.3, so this question has been postponed. Please. सर मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक और आईटीआईज को बहुत अच्छे तरीके से केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता मुहैया कराने के बावजूद महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक और आईटीआईज उस सहायता का सरकार की लापरवाही के कारण शायद उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे इस जवाब में बताया गया है कि 130 करोड़ महाराष्ट्र को दिया गया था, मगर 18 से लेकर 21 तक कोई उपयोग नहीं किया। आईटीआई नासिक को लगभग यहां पर लिखा गया है कि 6 करोड़ रुपया दिया गया था, उपयोग नहीं किया। इसकी वजह क्या मैं जान सकता हूं? Sir, the polytechnics and ITIs are a very important part of our education, higher education and skilling network. Polytechnics are administered by the Ministry of HRD, Ministry of Education and the AICT. And and the ITIs are administered by the Skill India, that is the MSD ministry, sir, of which whom I represent. Sir, the question that is being raised by the honourable member relates to the fact that money has been allocated. Money has been allocated to polytechnics and ITIs in the state of Maharashtra. However, they have not been able to have that money released to them. And the reason for that is very simple, sir. There is a condition that the state government that is responsible for the administration, day-to-day administration of these institutions, have to submit a utilization certificate. And those, as long as those utilization certificates are not submitted, no release can be made under the Government of India rules, sir. Thank you. Second supplementary. Sir, I would also like to know, sir, what are the reasons for their inability to provide the utilization certificate? Not going on records, please. Whether, sir, there are any allegations of maladministration and corruption which is rampant in Maharashtra. I would like to know whether there are any allegations pertaining to corruption and maladministration in Maharashtra. The not providing of utilization certificates is certainly a matter of concern, because these relate to education and skilling institutions that relate to and that affect the lives of youth. So if the member has any information relating to why these utilization certificates are not forthcoming, I would invite him to submit the same to me and I will look into it, sir. Thank you. Manya Shri Anil Desai ji. Sir, Honorable Minister has given a very elaborate answer regarding the provisions which are made in especially polytechnics and ITIs, which come under Skill Development Ministry. And my colleague, while saying that he has question, please, blatantly, no, I want to make a mention. Blatant accusations on the Maharashtra government is absolutely not tenable, and it is not accepted. Question, because the fact of the matter in this answer, whatever has been given by the Honourable Minister, mentions that these are the things which come from the centre and provisions to be Are you asked. not asking question? I am asking the Minister, sir, to you. Can Minister say, or can Minister give me answer on this, that there are several
private polytechnics are there after the skill development ministry has instituted and given impetus to this particular sector to generate employment in the be state. brief, Anil ji. And there is nothing of state government as such. And even I would like to ask the minister to see from the Maharashtra government, even I know Please for certain put question, that- otherwise I'll that move to other polytechnics and ITIs have time and again asked for the assistance which have not, which Are has you- not come are from you the asking ministry. your question What or is the not? answer for neglecting state of Maharashtra? Question which is number, Dr. V. Sivasan, please. Development centers are very less now, so the Adivasis and Dalits, It's not explanation. are facing lot of Questions problems. are, you are supposed to ask a question, you will requesting reply. the question Please. whether government has any plan to start new skill development centers in Adivasi areas, rural India. अभी देख, प्लीज माननीय मंत्री आप बताएं। माननीय सदस्यगण आपको सवाल पूछने हैं, आप 0 आवर नहीं पढ़ रहे हैं, कृपया सवाल पूछिए प्लीज। सवाल क्वेश्चन हिज आंसर एंड हिज आंसर यू गिव प्लीज ही इज रिप्लाइंग टू दैट, यू गो एंड लिसन This question. हिज क्वेश्चन, यू रिप्लाई इफ यू फील इट विल प्लीज। Sir, the honourable member. Please. Sir, the honourable member is agitated about something that I don't think he should be agitated about. The question was why, when money has been allotted to certain institutions that are important for the development of skilling and education. He is replying. He is replying to that. So, I clarified that the utilization certificates have not come from Government of Maharashtra. And it is important for the member to make sure that the utilization certificate comes. Because this money is allocated allotted to the... Now, B. Sivasan's reply. Sir, I would urge through you, sir, to request the member to ask the Government of Maharashtra to submit the utilization certificate so that the funding can be released. That is all. That is over. Sir, V. Sivasan reply. Yes, sir, V. Sivasan. the question by... Reply. Sir, as far as the question by Honorable Member Shivdasan is concerned, sir, this question pertains to Maharashtra, it pertains to ITIs and polytechnics, and he is asking questions about the broader Skill India network. I can assure him, sir, that we are very focused on growing the Skill India and taking it to every cluster, including tribals of India. So, if there is any specific information he wants, he is welcome to visit me in the office and I will share it with him, sir. Question number 81, Sri Rakesh Sinha. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, सभापति महोदय, हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेज के रूप में माओवाद प्लीज यू नो द रूल पोजीशंस माननीय जयराम रमेश जी, आपस में बात न करें। यू नो मोर विचारधारा है अबाउट इट, प्लीज जो विचारधारा न सिर्फ हिंसा पर आधारित है बल्कि देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास कर रहा है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इसमें अर्बन नक्सल का जो समर्थन मिल रहा है, जो लोग पत्रकार और शिक्षाविद के नाम पर छिपकर इस नक्सलवाद को, माओवाद को बढ़ा रहे हैं, और यह आयातित विचारधारा को मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि इस आयातित विचारधारा विश्वविद्यालय और पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जो अर्बन नक्सल के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उस अर्बन नक्सल को कुछ मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उस अर्बन नक्सल को सिर्फ आपका सवाल रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। प्लीज उनके विदेशों से उनके संबंध, उनको मिलने वाले फंड के बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। सवाल पूछे माननीय मंत्री जी। और सभापति महोदय, माननीय सदस्य राकेश जी ने एक ही बार में कई प्रश्न पूछा है और बड़ी ही बारीकी से पूछा है। मैं उनको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को भी कि भारत में माओवादी विचारधारा हमेशा, जैसा उन्होंने कहा है कि विचारधारा आयातित है, उस पर मैं कह रहा हूँ
कि भारत में माओवादी की विचारधारा हमेशा विदेशी माओवादी संगठनों और विचारकों से प्रभावित होते रहे। अगर इसके विरुद्ध देश में कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे को उठाते हैं और इनकी सहायता के लिए आगे भी आते हैं। सीपीआई माओवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर माओवादी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। उपसभापति महोदय, वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा विध्वंसक एवं मानवता विरोधी है, जबकि प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति और सोच की गोद में पल रही भारतीय विचारधारा रचनात्मक एवं मानवतावादी है। भारत विरोधी नारा लगाने वाले और भारतीय महापुरुषों का अपमान करने वाले विचार कभी भारतीय विचारधारा का अंग नहीं हो सकते। ऐसी विचारधारा विदेशी विचारधारा से ही ओतप्रोत है। भारतीय जो रचनात्मक और मानवतावाद की विचारधारा है के वाहक दुनिया में लोकप्रिय एवं गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी हैं। वामपंथ विचारधारा की विचारधारा भारत में आई भी और पली बढ़ी भी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है। जहां तक इन्होंने शहरी वामपंथ उग्रवाद की बात कही, भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना वामपंथ उग्रवाद की शहरी गतिविधियों सहित इसके सभी स्वरूपों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। यह हम जानते हैं कि वामपंथ उग्रवाद की कोई भी गतिविधि सोची समझी रणनीति के तहत की जाती है, जो देश की सुरक्षा और विकास में भी बाधक बनती है, चाहे वह शहरी क्षेत्र की गतिविधियां हो। यह भी सर्वविदित है कि वामपंथ उग्रवाद लोकतंत्र में विश्वास और हथियार के बल पर व्यवस्था बदलकर एक डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। जहां तक तो इस तरह से जो माननीय राकेश सिन्हा जी का प्रश्न है, आप कहते हैं तो मैं इसको इस संक्षिप्त में हमने इनका उत्तर दिया है। अगर और विस्तार में जानना चाहेंगे तो कभी उनको हम प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री आप पूछे इसके पहले प्लीज आप एक सेकंड सप्लीमेंट्री लिंकेज के विषय में सेकंड सप्लीमेंट्री आपको ना प्लीज। माननीय सदस्यगण आप सबसे मेरा आग्रह है, सवाल पूछते वक्त आप जीरो आर करने लगते हैं, उत्तर देते वक्त माननीय मंत्री लंबा होते हैं, और सवाल से अगर संतुष्ट है तो उसकी क्या प्रक्रिया आप सदस्य जानते हैं। सारी चीजें रूल्स के तहत चेयर करता है। चेयर के हाथ में क्या, आप अगर अच्छी तरह सवाल पूछे, माननीय मंत्री अच्छी तरह जवाब दे तो हम और सवालों का जवाब पा सकते हैं। प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज, और सीट पर बैठ करके प्लीज ना बोले। क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं झांसा, प्लीज बैठ जाए। प्लीज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर, प्लीज सभापति आप बैठे सभापति महोदय आप बोले, सिर्फ आप, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज आप बोले। 2015 में सरकार ने नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच से वेलफेयर ड्रिवन अप्रोच की ओर ले गया, जिससे नक्सलवाद पर बहुत नियंत्रण हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से 60 जिलों में जो नक्सलवाद फैला हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके साथ साथ सभापति महोदय, धन्यवाद, एक सवाल हो गया आपका। सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग अर्बन नक्सलवाद को लेजिटिमेसी देते हैं वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राकेश जी एक सवाल हो गया, प्लीज संक्षेप में माननीय महोदय। संक्षेप ही बोल रहा हूं। माननीय मोदी जी की सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की समस्या को प्रभावी तरीके से हल करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मंजूरी दी, जो बहुआयामी कार्य नीति पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी उपाय, आदिवासियों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों और हक को सुनिश्चित करना आदि शामिल है। इस योजना के दृढ़ क्रियान्वयन के फलस्वरूप पूरे देश में वामपंथ उग्रवाद के परिदृश्य में अत्यधिक सुधार हुआ है। महोदय, इसके परिणाम स्वरूप
हिंसा की घटनाओं में जैसा जानना चाह रहे थे विगत कुछ वर्षों से, मैं चाहूंगा कि उसको मैं संक्षिप्त में बताऊं। हिंसा की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2009 के 2028 के उच्चतम स्तर से घटकर 2021 में 509 हो गई है, 509। इसके परिणाम स्वरूप मौतों में तो कमी आई ही है, भौगोलिक विस्तार में भी इसमें कमी आई है। इसी तरह परिणामी मौतों की संख्या 2010 के 1005 के अब तक के उच्चतम स्तर से 85% घटकर 2021 में 147 हो गई है, 147। वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के शिकार जिलों की संख्या 2010 में जो 96 थी वह 2021 में घटकर 46 रह गई है, 46 रह गई है। माननीय उनका प्रश्न था सर, तो मैं जवाब तो दे दूं। वर्ष 2013 के परिदृश्य में 2021 में हिंसक घटनाओं में 55.2% की कमी 1136 से घटकर 509 और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 50.4% कमी यानी 397 से घटकर 147 हो गई है। माननीय मंत्री जी, डिटेल रिपोर्ट है तो भेज दे प्लीज। कंक्लूड लेटेस्ट। मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। और सशस्त्र माओवादी काडरों के खात्मे में 36% की वृद्धि यानी 100% से 126 हुई है। दूसरी ओर सुरक्षा बलों के जवानों के हताहत होने में 56.5% की कमी 155 से घटकर 50। माननीय मंत्री जी प्लीज। माननीय आंकड़े मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। यह आंकड़े सुरक्षा बलों के प्रभावी ऑपरेशन और गृह मंत्रालय द्वारा किए गए क्षमता का निर्माण और बार बार माननीय गृह मंत्री द्वारा राज्यों के साथ समन्वय बैठक करके डॉक्टर यह स्थिति लाई गई है। क्षमता निर्माण मंत्री जी दर्शाते हैं। मैं दूसरे सवाल को बुला रहा हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। कारण लगातार वामपंथी उग्रवादी की बड़ी तादाद और हिंसा रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। डॉक्टर प्रशांत नंदा। Thank you, sir. Sir, the Government of India has been requested to consider provision of dedicated helicopter to the state at the earliest for stationing at Koraput, which will cater to the operational requirement of most affected districts of like Malkangiri, Kandhamal and Kalahandi. The Honorable Chief Minister of Odisha has raised this issue in the review meeting on LWA taken by the Union Home Minister on 26/9/2021. What actions have been taken? महोदय, माननीय गृह मंत्री जी जब क्षेत्रीय काउंसिल की मीटिंग होती है या फिर माओवादी की समाप्ति से के संबंध में जब राज्यों से समन्वय की मीटिंग करते हैं और जब राज्य और केंद्र के सहयोग से माओवादी को समाप्त करने के लिए हम कदम उठाते हैं और जब हम पहल करते हैं तो उसमें भी यह विषय आता जरूर है। जैसा उन्होंने बताया है, एमएचए ने बड़ी ही तथा एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, एमएचए के जो हेलीकॉप्टर हमारे जो बीएसएफ के पास होते हैं और जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के पास है, भारत सरकार की एयरफोर्स के पास, जब जरूरत होती है तो हम दोनों हेलीकॉप्टरों का प्रयोग राज्य के कहने पे जरूरतों के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से हम उसको उपलब्ध कराते हैं। हम उसमें कोई कमी नहीं होने देते हैं। ठीक नहीं, कोई कमी नहीं होने देते। सर, हेलीकॉप्टर पर पूछ रहे थे, बार बार उन्होंने जो कहा कि इस हेलीकॉप्टर को बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए ही प्रभावी ढंग से लगाया जाए, तो हेलीकॉप्टर प्रभावी ढंग से ही लगाई जाती है। केंद्र सरकार की जो इकाइयां हैं, सभी इकाइयां इस देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए हम नक्सलवाद के क्षेत्र की समाप्ति के लिए, उसके खात्मा के लिए हम भारत सरकार की एयरफोर्स और एमएचए के हेलीकॉप्टर का हम उपयोग करते हैं। और सरकार बार बार इसकी कई राज्यों ने इसकी सराहना भी की है और हम कई राज्यों के एयरपोर्ट पर माननीय मंत्री जी अपने एमएचए के हेलीकॉप्टर को वहां स्टैंड बाई में रखते हैं और कार्रवाई को प्रभावी बनाते हैं। श्री विनय विश्वम जी
विनय विश्वम जी, यू नो कि अगर माननीय मंत्री जी के सवाल आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं है तो देयर आर रूल्स फॉर दैट, फॉलो दैट प्लीज। माननीय विनय विश्वम जी प्लीज। Yes, your question will come on record, Vinay ji. Yes, please. sir, thank you. Sir, But be brief, please. not so unbrief like that. Sir, is the government aware of the fact that unlike the right-wing extremism, which has a foreign influence, emanates from Italy and Germany, the left-wing extremism has got a it has a question. It has a socio-economic root under its base. Is the government aware of that fact? If so, whether the government has a plan to address that question of socio-economic deprivation, that's the Indian reality. Thank you. Thank you. We can argue, सभापति महोदय, 1 minute. Please, माननीय मंत्री सभापति महोदय, आप बोले माननीय मंत्री जी का जवाब। उप सभापति महोदय, माननीय विनय जी, आप दोनों आपस में बात ना करें। उप सभापति महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि हम सामाजिक रूप से नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड विनय जी प्लीज। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण कार्रवाइयों को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किस प्रकार से कर रही है और इसी का परिणाम है सर, सामाजिक और आर्थिक पहलों का ही परिणाम है कि आज उस प्रकार से उस यू प्लीज टॉक आउटसाइड मिस्टर जॉन बेटस, टॉक आउटसाइड प्लीज। सर और सुनिए सर और कहीं भी यह उदाहरण नहीं है कि उग्रवादी वामपंथी उग्रवादी संगठन विकास चाहते हैं। यही कारण है कि विकास बाधित होता रहा है और जब से वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमी आई है, इस मैं उसको कहने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कह रहा हूं कि उन क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास भी हुए हैं। यहां तक कि इतने बड़ी मात्रा में शिक्षण संस्थान खोले गए हैं जो सामाजिक सरोकारों से, संस्कारों से और ज्ञानों से जुड़ी हुई है। आप उठाकर हर आंकड़ों को देखिए, चाहे वह सड़क का निर्माण हो, चाहे दूरसंचार के टावर का निर्माण हो, चाहे विद्यालयों का निर्माण हो, चाहे उस प्रकार की जितनी भी अवसंरचनाएं हैं, उसका निर्माण यह दर्शाती है कि हम आर्थिक विकास भी कर रहे हैं, वहां संरचनात्मक विकास भी हो रहा है, आर्थिक उन्नति भी हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति भी हो रही है और सामाजिक वातावरण में शांति की व्यवस्था भी स्थापित हो रही है। धन्यवाद। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी। सर, देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसमें 2014 पर कितना बढ़ोतरी हो रहा था, अब कितना कमी आई है, मंत्री जी ने बताया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसी हिंसा के जो संगठन चलते हैं उसका ओवरग्राउंड सपोर्ट होता है और उसको आर्म सप्लाईज होते हैं, रोकने के लिए क्या कदम उठाए? धन्यवाद। उसके आर्म सप्लाई जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको प्रतिबंध करने के लिए क्या किया है? और ओवरग्राउंड सपोर्ट होता है, शहर में बैठे हैं, बाकी जगह बैठे हैं, धन्यवाद, और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया? ब्रीफली जवाब दें माननीय मंत्री जी। जब सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के पास से जो भी हथियार बरामद किए जाते हैं या उसके रोकने के लिए जो उपाय है, बड़ी तत्परता से राज्य के साथ समन्वय करके केंद्र सरकार ऑपरेशनों को प्रभावी बनाते हैं और उस ऑपरेशन के माध्यम से जो हथियार आते हैं उसको सीज करती है और सीज जब हम करते हैं तो उसको और एनआईए का जो गठन हुआ है
उस प्रकार के स्वभाव के या माओवादियों के इस प्रकार के गंभीर केसों को हम एनआईए को देते हैं। यूएपीए एक्ट के तहत इस पर हम कार्रवाई करते हैं, जिस एक्ट को सशक्तिकरण किया गया है। और जहां तक अर्बन नक्सल की बात गतिविधियों की करते हैं, जिसको हम तो अर्बन नक्सल का शब्द नहीं, हम तो जब हम वामपंथी उग्रवाद की बात करते हैं तो शहर हो या कहीं हो, हम उस पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। और एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्र में जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाती है, उसका चार्ज समान रूप से तैनाती चार्ज की गुना में केवल 10% ही है, इसलिए वह कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। जिसमें बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा जैसे बड़े कर्तव्य भी शामिल है, उसमें उसको हम बड़ा प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों की कई योजनाओं के माध्यम से समर्थन प्राप्त करता है, जिससे राज्यों की सुरक्षा संबंधी व्यय तथा सुरक्षा तंत्र को हम मजबूत करने के लिए फंड्स प्रदान करती है। 4824 करोड़ रुपए के अधिक फंड केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में ब्रीफली प्लीज 5 वर्षों में प्रभावित राज्यों को SCA, SRE तथा SIS योजना के तहत दिए गए हैं। हम इसकी बात इसलिए करते हैं कि जब चाहे वह आर्म्स की बात हो, चाहे उस पर नियंत्रण की बात हो, चाहे उस पर कार्रवाई की बात हो, उसको हम प्रभावी ढंग से हम राज्यों के साथ मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, विभिन्न योजनाओं माननीय मंत्री जी के साथ हम उसको धन्यवाद। प्लीज पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय सदस्य और मंत्रियों से कि आप अगर ब्रीफली उत्तर नहीं देंगे तो सवाल आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 82 श्रीमती रूपा गांगुली। श्रीमती रूपा गांगुली एब्सेंट। माननीय मंत्री जी लोकसभा। अच्छा प्लीज माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री रूपा जी। Honorable Chairman, answer given by the Honorable Minister is pretty clear and elaborate. बीच में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, एक क्वेश्चन सिस्टम का थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 15-20 दिन पहले से जवाब क्वेश्चन जमा करने का कोई मतलब नहीं बनता आजकल लगता है। सर एक चीज है, I have a little suggestion as well as a question. सवाल not suggestion please रूपा जी। Yes sir, yes sir, yes sir. एक तो क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल चीज होते हैं, स्कूल के बाहर जो बच्चे को भर्ती करने और वापस ले जाने के लिए जो पेरेंट बैठे रहते घंटों भर, उनके वहां कुछ एक ट्रेनिंग सिस्टम या कुछ वॉलंटरी सिस्टम किया जा सकता है जहां पे गार्जियंस को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, कुछ लोग नाउन ज्यादा याद नहीं रख सकते, कुछ लोग नंबर्स बहुत ज्यादा याद रखते हैं, तो ऐसे कुछ चीजें जैसे अलर्टनेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट अगर हम डालें और पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन सवाल पूछे, सवाल ब्रीफली पूछे। whether the government is considering to utilize the guardians आपका क्वेश्चन क्या है? as a participant, you know, in educational institutions. Whether you have any question or not, Rupa ji. Yeah, I've said the question. Please put your question, otherwise I'll move to other MPs. I've given the question, sir. Please. Whether government is considering to utilize the guardians' productivity and utilizing in educational institutions. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य ने जब हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन का समय में उन्होंने एक अच्छा सोच बताया, तो हमारे जो देश के स्वाधीन होने के बाद 73 इयर्स लग गया कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम उसको चेंज करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नया शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया और इसके तहत इसमें जो पैरा 2.7, पैरा 2.9, पैरा 3.6, पैरा 3.7 इसमें जो एसेंस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जो देश को आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये जो स्लोगन दिए थे, उसके बाद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सबका प्रयास ये भी जोड़ दिया। तो इसमें हम लोग जो गार्जियंस जो बैठे हैं, इसके हम लोग एक विद्यांजलि एक पोर्टल बनाया है। ये विद्यांजलि पोर्टल में जो स्कूल्स वो भी रजिस्टर करेंगे और जो सारे गार्जियन सलामनी वो भी रजिस्टर करते हैं। हम सदन को बता के मैंने भी खुश होंगे। अभी स्कूल्स 1,23,868 स्कूल ने रजिस्टर किया। अभी वॉलंटियर्स
16,686 रजिस्टर्ड किया और जो schools children impacted वो भी 11,644. Thank you. Second supplementary, Rupaji. Yeah. Question, second supplementary. Yes, sir. Moral education में ये घर और schools के एक साथ development के लिए कैसे-कैसे क्या-क्या किया जाए और थोड़ा से elaborately बोलिए. Thank you. मॉडल एजुकेशन में हम बहुत सारे स्टेप्स अकॉर्डिंग टू एनईपी लिए हैं. इसमें जो है हमारे करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मीन्स इसमें सेवा है, अहिंसा है, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस, ऐसे बहुत कुछ है. प्लूरलिज्म, राइटियस कंडक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, ये सारे करिकुलम में है. हमारे एनसीईआरटी ने बहुत सारे किताबें बनाए. हम पहले जो नैतिक शिक्षा नीति एक सब्जेक्ट के रूप में देखते थे, अभी हमारे होल स्कूल अप्रोच हो गया. सबके अंदर ये नैतिकता, मॉरल एजुकेशन रहेगा. धन्यवाद. माननीय श्री जवाहर सरकार जी. So the honorable member had asked a very specific question. Is there a moral education course or not? There's a lot of complicated reply with a lot of information that has come in, but the question is not answered. Then the first reference is to the National Curriculum Framework in 2005. As you know, that framework talks about human rights, justice, tolerance. Question, please, question. They talk about virtues that we seem to have forgotten. That's my first submission. And during that phase, 2000 phase, certain textbooks did mention moral education. But whether they are in use, because the NCERT produces a lot of books, whether they are in use is not stated. Then we come to the next one. Sir, please put your one question. The question is, yes. Let him come up and say. Yes, please. In the end, the question is passed on to the state saying this is a concurrent subject. The question that was asked was a very pointed and a very direct one. Let him say that we are having moral education course, because moral education is a very flexible term. Intolerance can also be a moral education, please. Whatever can be. We are doing this on the basis of such and such values in such and such place. बाद में भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी क्या? Please, thank you. Mahoday, I would like to remember the honorable member that what he told, that was in the paper only, that was not executed till now. But our government, what has done, that is being executed. And that I would like to speak, that moral education is in all aspects of the curriculum. It is in all the curriculum, across all textbooks and subjects. And there are so many things. Yes, I can show you. This is so many things, not in the books. It is being inculcated in all schools, even in the UGC guidelines to the higher education also. Everybody will follow it in practical. Thank you. माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आईटी का जो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट या तो उनको पढ़ाने के लिए कोई प्रावधान है? देखिए, हमारे नई शिक्षा नीति में जो हमने सोचा, दिस इज द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, that is and then the preparatory. Naturally, in the digital education, we will, whenever the digital education course will be in the schools,
and definitely all the arrangements will be there. Thank you. Manya Tiruchu Sivaji. Sir, this is a matter of great concern. That the deterioration in the society is only because of lack of moral education at primary school levels. Sir, the National Curriculum Framework 2005 and the New Education Policy 2020 only sets the guidelines and direction for framework of syllabus. So the question is whether there is a defined syllabus at primary school levels. The reply states that most of the majority of the schools comes under the state government, since it's concurrent list. Because it's concurrent list, many things are imposed by the union government on the states also, like NEET examination. I would like to know, sir, what is the status of moral education in the CBSE syllabus, and whether any direction has been given to dedicate as 1 hour or 1 period at least in a week for moral education. It was like those in those earlier days. Only that will bring that, whether the government has a proposal for that. Thank you. Manya Mantri ji. Honorable member has expressed his thought rightly. But the previous question I have already answered that our approach is not subject specific, it is a whole school approach. In all the subjects, yes, it is that in the whole school approach. That means no, you cannot. The member could not understand because he is on that frame. Because whenever a teacher will come, his approach will be on that. And the school, home, parents, society. Please. It's more than one. This hour has been fixed. How many hours will be? That has been fixed. According to CBSE guidelines and UGC, they have fixed the guidelines for moral education in 1 year. How many hours? It has been fixed. Thank you. Both from the CBSE side and from the UGC side. Yes, it has been fixed. Thank you. Question number 83, Mani Sri MB Shriyans Kumar. Yes, please. Honorable Minister, Mani Mantri ji. Well, Chairman, the statement is laid on the table of the House. First supplementary, Mani. So there are so many NGOs and voluntary organizations working in the drug addiction field and government-sponsored program on various institutions. But still drug abuse is spreading in a big way, sir. So many cases have been filed by the narcotic department. Will the government try and find more effective ways to deal with the problem? Mani Mantri ji, please. Sir, anyway, whether we survey is conducted before the national survey in the pattern substance used in the 2018, sir. The survey is pattern trends and substance use of committed by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the collaborate with the United Nations Office on Drugs and Crime was conducted 2004, sir. The household survey was comprehensive and study report that was prevails current use of alcohol 21%, sir. Cannabis is 3%, sir. Amphetamines is 7%, sir. Among men and age 60 years, among the current users, about 26 school alcohol users were reported to be dependent, sir, while 25% cannabis use. Please. I have already explained the process. If you are not satisfied with the answer, please follow that. Yes, we have taken so many steps, sir. We have started, we have Navchetana models, how we will generate awareness regarding effective substance abuse, sir. We have done number of Nasha Mukta Bharat Abhiyans in the country, sir. We have some Navchetana program for the school children between the age of 11-18 years, teachers-led intervention, sir. Navchetana one-day awareness generation, the preventive education programs, school children at class between 6th and 8th, sir. The program for the awareness to follow up the schools, children from the class. Time is over. Now this is discussed. Discussed. Mr. Muhammad Abdullah, please continue. Please continue. Please continue. Please continue your speech. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the time was allotted 15 minutes for me, but yesterday, when I was in my 10th minute, it was interrupted. So today I need 2-3 minutes more, sir. Today 2-3 more minutes, please.
Sir, the budget imposes 30% tax on the transaction of cryptocurrency, sir. To note here, the cryptocurrencies are not yet legalized in this country, but the taxation states that it is legal only by paying tax. It is still illegal, but it tells if you pay the tax, it will become legal. Though it is become legal, there is no regulatory body for cryptocurrency. Still, there is no any regulatory body cryptocurrency. Yesterday also I asked another one thing. You can sell the drugs which is illegal. Sir, please order in the house, sir. Sir, house to order. Please, आपस महेश पोदार, please आपस में बात न करें. Yesterday also I asked, sir. Please. We can sell the drugs which is illegal. If you pay a tax, it will become legal. But there is no any regulatory body. Do you find any difference between these two, sir? Selling the drugs and the cryptocurrency, tax on cryptocurrency. Is there any system that exists in the world like this, sir? There is a practice of taxing legalized system across the world. I mean, whether any tax is implemented, it comes along with an act. It comes along with an act. Any tax implemented, it comes along with an act. Even some acts may be implemented without the tax component. For instance, I like to remind from the past the Salt Tax an act with the tax component and the Self-Respect Marriage of Tamil Nadu an act without the tax component. But for the first time ever in the history of the world, sir, the first time ever in the history of the world, our union government is there to enforce the tax without any act. There is no act for any such act for the cryptocurrency, but tax is there. Yeah. Also one thing, sir. I am amazed to see the financial advisors of this union government, who are the world foremost sages. This is because they advised that sanitary napkins should be taxed at 12%, but for diamond it has been reduced to 5%. My friend Priyanka Chaudhary is there, Mausam Noor madam is there, Madam Rajini is there. You ask any of them, which is the important for a girl? It is a sanitary napkin or a diamond? Which is the important for one? Lakhs and crores of our sisters in this country, they are badly needed and they are unable to buy a single pack. But the 12% of the tax has been imposed on that. Honorable Sir, the stepmotherly treatment of Tamil Nadu and the Tamilians by the union government stands exposed again in this budget. One of the long-standing demands from the Delta district of Pudukkottai is the opening of a new railway line to Tanjavur from Pudukkottai. The survey, which has been completed and submitted by the British just before independence. This government has failed to take concrete steps to take the Delta district of Tamil Nadu into confidence, and this is evident not only in the railways department, but also by the ghost of the hydrocarbon projects, which is still hunt the farmers. Hundreds and thousands of people from Tamil Nadu cutting across caste and religion have contributed not just to the nation, but to the entire world. The union government is acting with a vendetta against us. Sir, due to the paucity of time, I am now in the last part of my speech. To sum up, presenting a budget, especially in the midst of an economic crisis, it is an opportunity to communicate a government vision for the country. This budget fails to do and is completely disconnected from the ground reality. Instead of tackling the problems at hand, the union government is diverting attention away by feigning to plan India at 100. The budget did not have any mention of the increasing problem of inequality that the country is facing now. Also, it is not focused on two of the country's most pressing problems, the unemployment and the crisis affecting agriculture and the informal sector. Also, it is a fact that a few billionaires and a few large companies have benefited greatly, multiplying their profitability and assets. Even as a pandemic has devastated the lives of hundreds of millions. The Oxfam reports reveals that 80% of households in the country suffered a decline in their income in the year marked by the tremendous loss of life and livelihoods, whereas on the other side, the number of Indian billionaires grew from 102 to 142. This remains one of the popular saying about the budget. I don't read the budget, but anyway, you can say the poorer are let down, the salaried class is hit hard, and the budget is sell out to the rich.
the rich get richer and the poor get poorer. What else happened when the tax on diamonds are reduced by 5% and corporate surcharge is reduced to 7%, while the tax on umbrellas are increased by 20%. Tax on umbrella is increased by 20%. The government should adequately tax the corporate in such dire time and generate money from social security. It is the duty of the government to take care of its citizens. Our DMK party leader and Tamil Nadu Chief Minister, Sri MK, said, after tackling charge as a CM, he said, he was elected to be the Chief Minister of Tamil Nadu, not just for the people who voted for DMK. Likewise, I pray the Union government to run a government not for its corporate paymasters, but for each and every citizen of India. History will judge you for your action. History will judge you only by your action. I pray the government and Honorable Prime Minister to follow very famous quote by Peraringer Anna while working for the people. நாடு என்பது வெறும் பூகோள படமல்ல அங்கு வாழுகின்ற மக்களின் உணர்ச்சிகளின் தொகுப்பு. The meaning is the country is not just a geographical map. It is the emotional sum of the people who lives there. So I kindly request the government to consider it. The union government should keep it in mind that the emotion and aspirations of its citizens and should take commensurate steps in the direction to develop both the country and its citizens. I once again thank the leader of my party and the Honorable Chairman for allowing me to take part in this debate on the Union Budget 22-23. Honorable Vice Chairman, sir, I conclude. Thank you. Thank you, Mohammed Abdullah ji. Now I request Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Sir, I would like to begin by quoting Joseph Stiglitz, the Nobel Prize winning economist, who said that the world is facing three existential crises. One, inequality. Second, climate change. And third, democracy, crisis of confidence in our political and economic institutions. He goes on to say that what we measure affects what we do. And if we measure the wrong thing, we will do the wrong thing. If we focus only on material well-being, on, say, whether the production of goods rather than on health, education, and the environment, we become distorted in the same way that these measures are distorted. We become more materialistic. So even though the GDP is not designed to measure the well-being of people, it is basically designed to find out the producing economic growth, the pattern of spending on goods and services. And therefore, if we want to put people as the first, we have to move beyond GDP, what Stiglitz is saying, what Amartya Sen has said, and many other economists are saying. Sir, I would like to use this framework in analyzing the budget. So first I will start with climate change. So on energy transition and climate action, this budget devotes about 8 paragraphs. I must compliment the Honorable Finance Minister for bringing the focus on climate action and climate change, which was one of the existential crises pointed out and flagged by Joseph Stiglitz. The budget talks about co-firing 5 to 7% biomass, swapping of batteries, green bonds for generating resources for funding this climate change. It talks about a low carbon strategy in the longer run for the economy. It talks about green energy and clean mobility systems as sunrise opportunities. It also talks about circular economy. So there are 3 things important when we talk about climate change, climate action. One is the mitigation measures, the second is the adaptation measures, and third, very important, is measurement, performance, accounting for it. Sir, in the budget, while speaking about all these things, giving a clear direction for the country, as far as climate change is concerned,
which is really commendable. Unfortunately, only rupees 3,030 crore has been earmarked for Ministry of Environment, which is 20% higher than the last year's allotment, but only 0.012% of India's total GDP. The commitment also has to come by matching allotments in the relevant heads of account. The biodiversity has been flagged as an enabling asset. I do agree, all the House would agree. However, the amount is only rupees 8.5 crore, less by 3.5 crore. As per the Economic Survey 2020-21, India's climate action funding has so far been met domestically. But for meeting the COP26 commitments, we need $1 trillion of money, $1 trillion US dollars of money. Therefore, my suggestion to the Honorable Finance Minister is that we need to incentivize private investment in the clean energy trajectory by having a national adaptation investment fund, and which is very transparently set up. Currently it is there, but the private sector's investment is not there so far. We need to encourage private sector to invest in adaptation finance, adaptation projects, and most importantly, India as a whole has to spend money on climate resilient development pathways, which Honorable Chief Minister of Orissa has been saying that we need to have a long-term strategy for disaster management in the eastern coast of India, which is generally ravaged by cyclones at regular intervals, and a huge amount of money goes. Sir, I would like to say why it is important. Sir, it is important because the FAO's report says that during the 2003 to 13 period, the climate-related economic loss to humanity was of the order of US $1.5 trillion. And all of us know that it is the poor who are disproportionately affected by any kind of climate change, and therefore by giving emphasis on climate, the budget has done the right thing. However, as I said, it is very important to bring it into our budget, into our mainstreaming, into our figures. Orissa is the first state in the country, under the able leadership of Honorable Chief Minister, we prepared the first climate budget, and probably the only state which has done so far in last year in 2020-21. Similar thing needs to be done at the Government of India level. Sir, what is good for the goose is not good for the gander. The word capital is not good for Marxian political scientists, but capital is good for public financial specialists and economists. Similarly, what is good for top 1% of the population may not be good for the bottom 50% of the population. What we see in the 2022-23 budget is an overabundance of capital expenditure, technology, and I spoke about climate action, ease of doing business, which will all have positive impact on the economy. However, there is an undernourishment of health, education, rural economy, farmers' welfare, women and child, and of the states themselves. Sir, the budget has betted heavily on capital expenditure last year, last to last year, and even the current year. It is a supply-side solution. But I would like to state and make a case whether it has worked, so far. In India, the multiplier effect by the central government of capital expenditure is 2.45. For the states, it is 2.0. This is assessed by RBI as well as by the National Institute of Public Finance and Policy. They have mentioned it in 2014 report, RBI Bulletin 2020 report. So a rupees 1 crore investment is supposed to generate much more than 1 crore increase in GDP. However, this multiplier effect, has it worked? Now it should convert itself in terms of generating fixed capital investment. So what we see, the gross fixed capital formation has decreased from 34.3% in 2011-12
to 26.6% in 2021. It has decreased from 34.3% to 26.6% as per the first revised estimates. So the one-dimensional track of completely putting all the eggs in the basket of capital expenditure may not work. I'll give you another figure. The private final consumption, which accounts for 55 to 56% of the GDP, is growing only at 5%. The manufacturing sector contributing 17% to the GDP, the employment in that sector has reduced by half during 2016-17 to 2021. It is the SEDA CMI bulletin. So there are two concerns about capital expenditure, two primary concerns. One is what is called as the hurdle rate, the cost of finance. Unless the internal rate of return is more than the cost of finance, nobody would come to invest. And that is what has happened. The IRR on a global range is between 8 to 12%. In India, it is only 6 to 8%. Therefore, PPP mode projects will have problems unless the cost of borrowing goes down. Something has to be done about cost of capital in this country. Not now, it has not happened before. I think a signal has to come from government at some time. So now I want to talk about the time lag, the time delays. So according to the Ministry of Surface Transport, MOSPI, it is in their database. December 2021, as of December 2021, out of 1,673 total projects, 25%, approximately 445, have incurred a cost overrun. 557, that is 30%, are delayed with an average time run of 45.69 months. So where does the multiplier effect come in? The multiplier effect gets delayed. The trickle down gets delayed. The wage creation at the bottom of the pyramid gets delayed. And that is what has happened in the private, that is what has happened so far for not being able to generate the gross fixed capital formation. And this has resulted in what we have discussed so far. Many members have discussed, and therefore I am not going to discuss about unemployment. What about the social sector? I said it is undernourished. Out of 21 primary sectors, I do not take the total allocation as a percentage of the total budgeted BE this year, but I'm taking it as a percentage of the GDP. Out of 21 sectors, in 8 sectors it has decreased as a percentage of GDP compared to last year. In 8 sectors there are no change. In 5 sectors it is marginal increase to the extent of 0.1%. Therefore there is nothing which has happened in the social sector. Then how do you create a level playing field? In the entire budget, one has talked about opportunities to be given, opportunities being created, and we know opportunities can be created only when we spend on things like health and education. I will talk about these two things, health and education now. Now, as far as health is concerned, the budget started with health, and I thought that the allocations would have become astoundingly high. Currently, if we look at the allocations in health, it is 0.33% of the GDP, which is less than the last year and less than or even almost equal to the last year before last. We currently have 1 bed per 1,000 people against global average of 2.9. We are lower than even the BRIC countries. We have 1 doctor per 1,500 when the requirement is per 1,000. We have 1 nurse for 670 when the requirement is 1 nurse per 300 as per the 15th Finance Commission report. So the investment in health is definitely required. I look forward to it, and I think there is still some way in which we have to get investment into the health sector in this country, particularly the primary healthcare sector. The Standing Committee had also suggested investment in primary healthcare to be requiring a push, a definitive push. Now I talk about agriculture. Now if I talk about agriculture, I would like to say that unless
The Swaminathan Committee report is implemented as has been demanded by Honorable Chief Minister of Orissa several times. The farmers' income probably cannot get doubled. In fact, the budget doesn't talk about doubling of farmers' income as of 2022 at all. The procurement has decreased from 126 to 120.8 metric ton. Number of farmers who have been benefited has decreased from 19.7 million to 16.3 million. The reduction in the price support schemes, which does the procurement, is to the extent of about 62%. At a time when we are talking about empowering the farmers, increasing their income, the procurement allocation has come down, and it is a matter of concern. What is also a matter of concern is the fact that Agricultural Investment Fund, in which 1 lakh crore was supposed to be spent in 6 years, after 2 years, the spending is 6,627 crore only, that is approved. Spending is a mere 2.6%, 2,654 crore. So at the rural economy level, at the agriculture level, there is tremendous amount of distress. Please so conclude, Dr. Ji. Finally, I will end by talking about... Your last minute. 1 minute, yeah. Finally, I'll talk about federal equity. Now, if we talk about federal equity, the amount of resource allocation to the states, as Honorable Prime Minister said yesterday, it is in the states' development that the development of the country can take place. But what has happened that the percentage of devolution to the state as a percentage of total gross tax revenue has declined from 30.02% to 29.61%. And the quantum of cess, however, which is completely appropriated by the center, has increased from 3.7 lakh crores to 4.45 lakh crores. I can tell you, since I do not have the time, that if you do a calculation of the cess and surcharge which was levied on education and health, one in 2004-05, the other in 2018, and take that allocation out of the current allocation, then you find an abysmal figure as the percentage of investment on education and health, which is a matter of worry. Please conclude, sir. My point of saying all this is that, Madam Finance Minister, that definitely there is growth in the economy, definitely there is a direction on climate change, there is a definite direction on using technology for giving benefits, which is very positive. But the problem is, all is still not well. It is not business as usual. The rural economy may not be under distress, but it is under stress. And therefore, the emphasis on rural economy in terms of NREGS, in terms of investment in agricultural investment fund, in terms of providing housing, has to continue. As far as housing is concerned, I must bring to the notice of this House that the Prime Minister, Honorable Prime Minister, said housing for all by 2022. Then why not to 8.5 lakh Udiyas? Let them be Lakhpatis. Let them be Lakhpatis. The figure, the prayer of the government of Orissa is pending for so long. So I would end once again by thanking the Prime Minister for the budget proposals, for giving a direction, and would request her to consider the suggestions given by me. Thank you so much. The next speaker, Shri K.R. Suresh Reddy. Thank you, Chair. So I rise to congratulate the Finance Minister on a 4th consecutive speech. A budget 4 in a row is a new mantra, as they say in cricket. 4 in a row is a new mantra. Hat-trick is over now. Anyone who bowls and takes 4 in a row is a sure match winner. I hope this would happen even here. But when I heard the Honorable Finance Minister's speech for 90 minutes, the only thing confident I could see was her delivering the speech. Today, with great and a heavy heart, I must tell the Finance Minister that her 90-minute speech has left 90 crore Indians out of her budget. I say this for the following reasons, sir. Because this proclaimed progressive budget has alienated a majority of the poor people. I say this because agriculture, which is the backbone of our country,
and Kisan, the ever-burden bearer, which constitutes 60% of the workforce agriculture, contributing 18% to GDP, and out of which, in the entire agriculture, 82% of them are small and marginal farmers, having small holdings of 1 to 5 acres. This Azadi Ka Amrit Mahotsav and entering into Amrit Kal without tangible progressive opportunities to farmers is regressive and Rahu Kal for them. Para 28 of the budget speech of the Finance Minister mentions about the rice and wheat procurement. उसमें बड़े जोर से मैडम ने बताया कि 2,37 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट पेमेंट किया 163 लाख फार्मर्स को। जब ये बात आई तो मैं नोटिस किया सर हाउस में कि तालियां कम बजे उसमें, तालियां सिर्फ मैडम के लेफ्ट साइड से थोड़ा बहुत बजा, मगर ओवरऑल हाउस में वो मूड नहीं था। और उसकी वजह ये मैं समझता हूं कि ये साल 2022 was the year of the promise. The promise was to double the farmers' income. इसका मतलब ये है कि तालियां ज्यादा बजते थे अगर आपके अनाउंसमेंट में इंस्टेड ऑफ 2,37 लाख करोड़ अगर आप बताते कि हमने 4,74 लाख करोड़ हमने किसानों को ट्रांसफर किया, तो बात होती थी कि भाई हमारा इनकम डबल हुआ। मगर आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है, डबल करने की इच्छा नहीं दिख रही आपके पॉलिसीज में, तो छोटा मोटा चॉकलेट की तरह कुछ पॉलिसीज बताते रहते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइम मिनिस्टर किसान प्रोग्राम, तो उसमें आप बताएं कि हम 70,000 करोड़ फार्मर्स को जो है सो हम बांटे, और इसको कहते हैं डबलिंग द इनकम तो नहीं होता, ये अश्योर्ड इनकम है। अगर आप 4 लाख, जैसे मैं बताया 4,74,000 में आप ये 2,37 लाख करोड़ आप बचाए क्योंकि डबल नहीं किए, और ये 2,37 लाख करोड़ में आपका 70,000 भी अगर हम निकालते हैं तो फिर भी आज ये गवर्नमेंट 1,67,000 करोड़ आप एमएसपी फार्मर इनकम डबल ना करने से सरकार ने ये पैसे बचा लिया है। सर अगर आप कहते हैं कि भाई एमएसपी हम तो कुछ बढ़ाते गए, तो आप देखिए एग्रीकल्चर का जो इनपुट होता है किसान का, वो भी वही अंदाज से और ज्यादा अंदाज से बढ़ गया है। आप इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट में 10,000 करोड़ इस साल आप कम कर चुके हैं। आपका रीसेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो हमको तेलंगाना एक उदाहरण है कि पैडी प्रोक्योरमेंट में किसान को, तेलंगाना सरकार को कितने कठिनाइयां आपने करवाया कि भाई वी हैड टू कम विद अ बेगिंग बोल, चीफ मिनिस्टर हैड टू कम, रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, plead in the government. Half the cabinet was here, entire MPs were camping here, most of the MLAs were here, just requesting the government कि भाई आप हमारा प्रोड्यूस लेंगे नहीं लेंगे, रबी में आप लेंगे नहीं लेंगे। तो आपका पॉलिसी इतना वेग है कि हमने पूछा कि रबी का प्रोक्योरमेंट आप लेंगे, तो आपने बताया कि आज नहीं, हम मार्च में करेंगे अनाउंसमेंट। जब किसान का काम शुरू होता है दिसंबर में, आप मार्च में बताने की बात, ये आपका किस तरीके से आपका पॉलिसी है, किस तरीके से किसान खेती को आप देखते। एक छोटा सा मिसाल है, ये कोई स्विगी सर्विस नहीं है कि जब भूख लगा जब खाना मंगाया आप, क्योंकि किसान को तो टाइम लगता है। ये दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये काम चलते रहती है, और उसका जो है सो आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई इसमें किसान को ये तकलीफ उठाना पड़ा। साहब एक असेसमेंट हुआ था, सिचुएशंस असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स, उन्होंने बताया कि आज के हालात में जो खेतीबाड़ी करता है उसका 40% आमदनी और कम होते जा रही है। और देखिए लाठी पे लाठी किसान पे, इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी आप कम कर दिए, आप करीबन 35 to 40,000 करोड़ आप इस बजट में कम कर चुके हैं।
इसमें किसान की तकलीफ और बढ़ेगी। फूड सब्सिडी आपने 80,000 करोड़ कम करे। सेंट्रल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो करीबन 3,596 करोड़ का था, उसको आप कम करके 1,500 करोड़ पे लाए। क्रॉप इंश्योरेंस आपने करीबन 16,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पे लाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 2,700 करोड़ से 1,500 करोड़ तक लाए। और इवन रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च पे सिर्फ 500 करोड़ लगाए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक बेयर दे टेंड टू स्पेंड मोर, सर। Reddy ji, your last minute. I'm already the last. No, no, yes, yes. Your party has given you 8 minutes. और 5 मिनट है, सर। 8 minutes. You have completed. No, 12 minutes I was told, sir. No, no, 8 minutes is given and 7 minutes is over. Sir. Second speaker is not speaking. He is speaking. Then it is okay. So what is my entire time now, sir? Now another 8 minutes you have. Another 8 minutes. Thank you, sir. Sir, इसके साथ साथ मनरेगा का डिमांड बढ़ रहा है, बट आपका बजट एलोकेशंस कम हो रहे हैं साहब। आप डिमांड ड्रिवन बोल रहे हैं। जब डिमांड ड्रिवन है तो जो ग्रामीण लेबर है उनको विश्वास, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड करते? जब 1,11,000 करोड़ खर्च हुआ था 2 years बैक, तो आप बताइए इस साल भी हम आपके साथ ठहरेंगे। कम करते जा रहे हैं कि उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। हो सकता है आपके कुछ कारण हो सकते हैं आपका, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द sheer unemployment pressure in the rural India will force and compel the government to increase the allocation. अगर आपका दिल नहीं मानता बढ़ाने के लिए, मगर वहां की जरूरतें आपको मजबूर करेगा कि आप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ और है ही नहीं इस पे। सर, there was some apprehensions in the government कि भाई ये misuse हो रहा है and it needs to be revamped, या asset creation ठीक नहीं हो रहा। पहले से करीबन 5-6 साल से केसीआर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कहते आ रहे कि भाई इसको आप एग्रीकल्चर से जुड़ाइए। लिंकिंग अप विद एग्रीकल्चर विल क्रिएट सम रिलीफ फॉर द फार्मर। इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपका मिसयूज की जो आरोप है या एसेट क्रिएशन का जो डाउट है, ये सब अगर किसान के साथ आप मिलाएंगे तो ये सब ठीक होगा, क्योंकि किसान एक ईमानदार है। प्राण जाएगा पर वचन न जाएगा, तो ईमानदार रहेगा, आपका हर एक पैसे का हिसाब किताब आपको वो बताएगा। सो लिंक इट अप विद एग्रीकल्चर इज द रिक्वेस्ट सर। तो एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपका इनकम डबल करना चाहते हैं तो इसकी ग्रोथ रेट 3.5% नहीं बल्कि 14% एग्रीकल्चर का रहना चाहिए। 14% हो रहा है। तेलंगाना इज एन लाइव एग्जाम्पल। तेलंगाना agriculture is growing at 14%. Here, overall, it's going at 3.5%. And unless you bring it to a reasonable height, the doubling of incomes will only be a mirage, will only be a dream, sir. इसीलिए आज तेलंगाना में जो पहले तेलंगाना बनने से पहले आम लेबर किसान जो दुबई मस्कट नौकरी के लिए जाते थे, वो सब वापस आ रहे। आज आराम से सुकून से उनकी खेती बाड़ी की काम हो रही है और गाँव में बिल्कुल nice livelihood is given to them and a brotherhood is spreading, sir. So, para 30 to 35 of the budget speech, the finance minister talks about a lot of private participation in agriculture, private agri-tech players, PPP mode, financial startups, money creation of unicorns. Going by our past experience, ये बातें देखे तो सुने तो हमको ये डर महसूस हो रहा है ऑनरेबल चेयर कि कहीं से ये 3 एग्रीकल्चर लॉस जो है कहीं बैकडोर एंट्री तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दिस इज एन एप्रहेंशन वी नीड टू क्लियर, क्योंकि द स्लो रिकवरी इन कंजम्पशन is the reduced profitability of agriculture, which squeeze the reduced incomes and demand. The evidence is very clear. आज एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस का जो परसेंटेज राइस है वो सिर्फ 5.2 है और अदर नॉन एग्रीकल्चर्स का 11.4% है। और ये मनरेगा का डिमांड बढ़ने का वजह ये है क्योंकि एग्रीकल्चर में मुनाफा नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड ओनर भी लैंड लेबरर बन रहा है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। और मैं इस माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस देश को यू हैव टू अश्योर द कंट्री, यू हैव टू अश्योर द फार्मर्स दैट एमएसपी will remain
और इस आप आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आप ये भी बताइए, आप कहीं आपके प्लान्स बताए, उसमें एक जो है सो MSP रहेगा and MSCP will continue to stay. Sir, after agriculture, the next biggest employment creator is MSME. और MSME के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है. सिर्फ एक दो बात मैं यहाँ दौड़ाना चाहता हूँ कि भाई ये करीबन 6.3 करोड़ MSMEs इस देश में हैं और आप दो इसके ऊपर धक्के पे धक्के गिरे, एक मैन मेड और एक जो है सो नेचुरल कैलामिटी. मैन मेड था आपका डीमोनेटाइजेशन और आपका GST. आप देखिए MSME में डीमोनेटाइजेशन और GST के बाद करीबन 10,000 बिजनेस ओनर्स 2019 में सुसाइड करे और 11,716 suicides were committed in 2020. And the biggest impact of your demonetization as per RBI was on MSME was the demonetization. और आप जो भी remedial steps लिए हैं वो लेट थे और कम थे. अब आप पैंडेमिक के बाद आपने कुछ बताया कि भाई हम इंटरेस्ट लोन विदाउट कोलैटरल देने के वायदा किए, बट माय रिक्वेस्ट इज यू हैव टू लुक एट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट. जब फैक्ट्रीज बंद थे, एक साल बंद थे, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है सो बढ़ते गया, वो आप निकाल दीजिए. और उनके ऊपर फिक्स्ड पावर कॉस्ट था, कारखाना चला या ना चला मगर उनका बिजली का बिल आते गया, वो उसको आप जो है सो ऑब्जर्व करिए. दिस विल बी सम रिलीफ. और ये MSME के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आपने ये बताया कि भाई हम कुछ पैसे देंगे. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर also contributes a lot to the GDP, so why don't you take it as an infrastructure? The facilities given to infrastructure, long-term learning, etc., should be given to these MSMEs to this hospitality sector as you've been giving it to the other infrastructure sector. And the other key issue here in Madam Finance Minister's speech was an emphasis on digital, which is very good. Everything digital was a word which came up almost in all the pages. And we appreciate it. Definitely, we change with the times, and you have to. But my agony is, if the same analogy, if the same principle, if the same policy was adopted way back in 2014 or 2015, things would have been much, much better for the country. And a small example for that is the ITIR, the Information Technology Investment Region, which was sanctioned to Hyderabad. You kept it on hold. It was a major, major boost for the country. It was a very creative investment idea where, Chairman, sir, it would have fit into what you call it, your ecosystem, because Hyderabad was also a non-seismic region, less earthquakes. तो उससे अच्छे बड़ा जगह हैदराबाद से जगह बहुत कम है हिंदुस्तान में जहाँ ऐसे इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं, मगर आप कुछ नहीं कर सके. ITIR में काफ़ी आपने लापरवाही की, उसकी वजह से करीबन 53 plus 15, almost 70 to 75 lakh jobs have been lost in the last 5-7 years. So this is something, and of course, not to mention about the revenue and other issues. So when yesterday the Prime Minister, when he mentioned about the bifurcation of AP and Telangana, probably this was something playing in his mind. This is what seems to be coming out, because what was mentioned by the Honorable Prime Minister yesterday, sir, it is something very, very disturbing for the people, because it is through a lot of struggle. One of the biggest struggles ever witnessed in the history of India was the bifurcation of Andhra Pradesh. Under the leadership of our Chief Minister, KCR Garu, we went through 14 years of struggle to eventually get it. Agar House mein Telangana ka bill pass hua, to pass hua, kyunki House is supreme. Nobody can question the authority of the House. Nobody can question the authority of the chair. Not even the Prime Minister can question the authority of this House, sir. But yesterday, he raised it. अगर आपको तकलीफ हुआ bifurcation में, मैं पूछना चाह रहा हूं कि कितने बार वो reorganization bill यहाँ पे amendment को आया है? Did you make any amendments in the last 8 years? The demands from Telangana, the demands from Andhra are continuously coming up. But still,
You refuse to refer it. You refuse to chair even a single meeting. और वहाँ पे क्या हो रहा है, sir? Please conclude, sir. Sir, just 1 minute. So this is an important thing. I'll just 1 minute. I'm concluding with one last thing. मैं तो काफी पूछते गया, तो एक छोटा सा मेरे को एक WhatsApp का फॉरवर्ड याद आता है कि एक नेता ने अपने दोस्तों को 8-10 लोगों को अपने घर पे चाय पे बुलाया और बोला भाई मेरे घर में सबसे अच्छा चाय बनती है। तो सबने गए 10 लोग उम्मीद में कि अच्छा चाय मिलेगा वहाँ, और जब घर गए और उनके बावर्ची को बोले भैया चाय बनाओ, तो उन्होंने कहा सब 130 सेकेंड्स और चीनी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं चाय लाओ, और चाय आ गया। तो वो नेता ने कहा देखो भाई ये स्पेशल चाय है मगर इसमें एक कप में चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, जिसको भी वो कप आएगा वो सबको आज रात में भोजन पे ले जाएगा। तो 8-10 लोग जितने भी बैठे वो सब ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी ने भी कम नहीं किया। तो मैं भी यही कहूंगा कि वेरी स्वीट बजट बट डू जस्टिस टू आवर रीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द नेक्स्ट स्पीकर श्री विजय साई रेड्डी। Thank you, Vice Chairman, sir. We should appreciate the Honorable Finance Minister for presenting this budget in most difficult and trying times. Initially, sir, we all thought that it would be Honorable Finance Minister would submit the budget for UP and Punjab. However, as the budget speech of the Honorable Finance Minister went on, and it was nobody's budget, no one's budget. And I can confidently say that it is a stylish budget with no substance. I'm sorry to say that. Sir, to put it in a different words, it's a budget like an operation successful but patient is dead. This budget may be a good budget for the country according to the Honorable Finance Minister, but for AP it is bad and worst. Sir, my point is Atmanirbharata of the states. Honorable Finance Minister on several occasions talks about Atmanirbhar Bharat. But I am asking Madam, what is Atmanirbharata of the states? Not the center, not only the center. The center, according to me, and I'll give the statistics also, Vice Chairman, sir, using manipulative practices to reduce the share of state share of taxes from the central pool of taxes. Sir, center has deliberately I'm using the word, increasing the cess and surcharges in its gross tax revenues, which is not shared with the states. Sir, it has been brought down, the states' share has been brought down. In reality, though the 15th, according to the Honorable Finance Minister, the 15th Finance Commission has recommended 41%. In reality, the real percentage works out to 29%. I can give the figures also, sir. It is not 41%. It is because of cess and surcharges. And I'll give petrol as an example. The central government has collected 3.35 lakh crores by way of cess on petrol, shared just 5.8% of it, that is 19,475 crores with the states. What is shared with the states? In the case of petrol, is only 5.8%. Out of 100 rupees, 5 rupee 80 paisa. Sir, by increasing Honorable Finance Minister has coined a special word, apart from cess and surcharge. Special additional excise duty. This is nothing but cess and surcharge. By increasing the special excise additional duty, nothing but cess, the center has pooled 2.87 lakh crores
from which the states are not getting a single rupee, not a single rupee. This is the situation. Sir, the share of tax component in the excise duty, which is shared with the states, has decreased by 40% in the case of petrol and 59% in the case of diesel, sir. Sir, at present, I have a statistics which I would like to, Honorable Madam is present. Sir, in the case of petrol, let us presume that the cost of the petrol is 100 rupees for the sake of brevity. Basic price is 45 rupees. Basic excise duty is 1 rupee 40 paise. And special additional excise duty is 11 rupees. Out of 11 rupees, nothing goes to the state. Nothing. Not a single rupee. Road and infrastructure cess, 18 rupees. Nothing goes to the states. Agricultural infrastructure and development cess, 2 rupees 50 paisa. Nothing goes to the states. Dealers commission, of course it goes to the dealers. Taxes, whereas the states are empowered to levy VAT in the case of petrol and liquor. What is that? The maximum percentage any states can charge is only 10 to 15%. It varies from 10 to 15%. What is center getting? Central government is getting 85% and states are getting 15%. This is the justice what central government is rendering in the case of taxes, share of taxes. Sir, AP share in the divisible pool, I would like to share with the Honorable Madam. AP state, when compared to the divisible profits, AP share of taxes. In 13th Finance Commission, between 2010 and 2015, AP share is 6.9%. 14th Finance Commission, 2015 to 20, from 6.9% it has come down to 4.3%. It has come down by 2.6%. In 15th Finance Commission, it is 4.07% in 2000, whereas in the previous year, 2020-21, it was 4.111%. So year after year, Andhra Pradesh is getting, the share of taxes is coming down, and it is nothing but a stepmotherly treatment. Honorable Finance Minister is our daughter-in-law of our state. I want everybody to, all the honorable members to know about it. Sir, deciding the state share of taxes, there are certain points, that is population, forest cover, geographical area, there are various parameters. Quite surprisingly, 15% weightage is given for population. Andhra Pradesh is one state which is effectively controlling the population. And those states which are not controlling the population, they are benefited. Those states which are controlling the population, they are punished. This is the formula what the central government is following, or Finance Commission is following. Sir, comparative of AP budget, see on various sectors, how the center is spending and how Andhra Pradesh is spending. Sir, on agriculture, Andhra Pradesh is spending 5.9% of the total expenditure, whereas center, which is agriculture, is considered to be priority sector. Center is only spending 3.8%. Education, Andhra is spending 11.8% and center is spending 2.6%. Health sector, Andhra is spending 6%, center is spending 2.2%. Rural development, Andhra is spending 7.1%, whereas center is spending 5.2%. Whereas my colleague sitting in front of me, Kanakamedala Ravindra, TDP, they criticize that state is not spending enough. And their leader, day in and day out, criticizes YSRCP government, saying that the government has failed in all respects, in all counts. This is how the politics are being played. Sir, the crucial sectors like agriculture, education, health, rural development, social welfare, Andhra Pradesh is spending
more than the central government despite severe financial crisis on account of stepmotherly treatment by the central government. Sir, coming to income tax, I would like to bring to the notice of Honorable Madam. Madam, there is a 10% increase in the overall revenues on account of tax revenues. Madam, the tax exemption limit, when you came to power in 2014, was 2,50,000. And now, from 2014 to 2022, what is the inflation? Cumulative inflation is 48%, sir. Whereas, basic tax exemption limit remains the same. And I request the Honorable Madam to link this minimum tax exemption limit with that of inflation rate. Sir, with inflation reaching all-time high, but tax rates remain the same. This is the pathetic situation. And I request the Honorable Madam to further rationalize it and inflation be adjusted, again adjusted IT deductions and exemptions. Madam, there are certain difficulties, because I am also taxpayer and chartered accountant, there are certain difficulties that are being faced by the assessees. One is, there are 5 tedious documents which one has to collect in order to file the tax returns. One is Form 16 from the employer. Second is for interest income TDS certificates in Form 16A. Third is TDS certificates for other income and Form 26AS, and tax saving investment and expenditure proofs. These are all the documents which one has to collect in order to file the tax returns. My suggestion in this regard is consolidate multiple compliances across various forms into single ITR form. And form will make ITR, this suggestion would make the form filing IT friendly. Madam, there are certain which many assessees would have brought to the notice of Honorable Finance Minister. There are certain glitches in the portal. Lakhs of taxpayers have been complaining of glitches and errors in income tax portal for months now. There are several occasions where Honorable Madam has extended the time limit for filing the tax returns, and these glitches are to be addressed very promptly, sir. Sir, reduced subsidies, which is very, very important. Sir, food subsidy has been reduced. Center claims that nobody, in fact, in the yesterday's meeting also, the center claims that nobody remained hungry during the pandemic. But the allocation of food subsidy is down by 28%. Sir, fertilizer subsidy. Reduction in fertilizer subsidy is definitely anti-farmer. Increase in the fertilizer prices. In fact, in 2014, AP Reorganization Act has been passed. And 13 or 14. South Coastal Railway Zone, Vizag Chennai Corridor, Polavaram Irrigation Project. In fact, I have submitted to I met Honorable Madam and then made a submission also. Kadapa Steel Plant, Dugarajapatnam Port, and Kakinada Petrochemical Complex. These are all the pending issues which are yet to be addressed by the central government even after considerable lapse of time. Sir, national educational institutions which the central government has granted by virtue of AP Reorganization Act, all are operating from the rental premises. Not a single national institute has got its own premises. Whether it is, be it Indian Institute of Petroleum and Energy and Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology, Central Tribal University, all are operating from temporary campuses, and I should thank Jairam Ramesh ji for drafting such a loose act, very loosely drafted act of AP Reorganization Act. He very often, now and then, repeatedly claims that he is the author of the AP Reorganization Act, and I am sorry to say that
He has drafted it most rudely, sir. And which BJP is taking advantage of it. Sir, in conclusion, the AP leadership, AP BJP leadership, every day now started criticizing our party and government for no reason. What is centre doing for AP? That AP BJP will not raise that issue. Centre is doing nothing and giving stepmotherly treatment to AP, Andhra Pradesh, whereas Andhra Pradesh BJP day in and day out criticizes the ISRCP government. And in reality, the biggest critic of the central leadership of BJP and the union budget of AP is AP state BJP leadership itself. Sir, finally, in conclusion, I would like to submit to the Honorable Madam that the government claims the mantra, most chanted mantra of BJP government is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Every year, one element is added to the slogan. Initially it is Sabka Saath, Sabka Vikas, then Sabka Vishwas, then Sabka Prayas. Every year one is added. Madam, I'm asking, this budget... Please conclude. I'm concluding. This budget does not ensure Saath to the states. No Saath. This budget does not ensure Vikas to the states. This budget not taken the states into Vishwas. No Vishwas on the states. This budget does not ensure supporting the prayas of the states. No Saath, no Vikas, no Vishwas, no prayas. Thank you very much, sir. Thank you for giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Vijay Reddy ji. Now, the next speaker, Srimati Jarna Das Baidya. Madam, you have 7 minutes. Yes, sir. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. The Finance Minister presented the budget in the backdrop of an economic scenario when majority of the people are facing jobless and huge cuts in real income. GDP in current financial year is estimated to marginally cross the pre-pandemic levels. The private consumption expenditure is still short of the pre-pandemic levels, and industries are facing low capacity utilization and rising inventories primarily because of very low demand in the economy. Sir, मैं बोलना चाहती हूँ, जब इलेक्शन आते हैं, आश्चर्य लगता है, मैं त्रिपुरा से बिलोंग्स करती हूँ, तो क्या बोला जाता है, वो जॉबलेस जो यूथ है, उसको एक मोबाइल नंबर दिया गया, बोले मिस कॉल करने से नौकरी मिल जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद जब मिस कॉल किया तो अब क्या है, इस नंबर से बोलते ये नंबर मौजूद नहीं है, ये नंबर गए। सोशल पेंशन 2000 रुपया करेंगे, कहाँ नहीं किया। और मनरेगा पर 340 रुपीज वो इंक्रीज करेंगे और 200 दिन का काम, अभी 16 डेज और 15 डेज काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होते, और वेज भी नहीं, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। तो ये बोलने से क्या होता है, बजट में आना चाहिए। सर, जो मनरेगा पर इस बजट में हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर बाय 25,000 crores in मनरेगा and reduce food, fuel and fertilizer subsidies and also in allocation in health and rural development. सर, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जो पीएम आवास योजना, वो क्या हो रहा है, सबको घर दे रहा है, ये अच्छा बात है, सबका घर होना चाहिए,
लेकिन इस गौर में एलोकेशन क्या है? 1,30,000 रुपया। इसमें क्या होता है? ब्रिक फील्ड में कोई गया है? एक ब्रिक का दाम आज कितना है? 14 रुपया। इससे घर कैसे होगा? 1,30,000 में कैसे घर करेंगे? तो ये बजट में हम लोग देख रहे हैं प्रपोज a growth of total expenditure by 1,74,909 crores from the revised estimates of 2021-22, but as percentage of GDP, the total expenditure has come down 17.8% in 2020-21 to 15.3% in 2022-23 budget estimates. तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं? बजट में सब कुछ दे रहा है, सब कुछ ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा, ऐसे ही बोलते हैं। तो इस बजट में the squeegee on expenditure is not merely in the central government expenditure. These transfers are to come down from 6.915 of GDP in revised estimate 2021-22 to 6.5% in 2022-23 only. The agriculture and farmers, allocation of all major schemes for farmers have been seen budget cut. The allocation for procurement of FCI and under decentralization procurement scheme has been reduced by about 28% at a time when farmers are struggling for a legally guaranteed MSP. Allocation of farmers for fertilizer subsidy has been reduced by 25% under PM Kishan Yojana. And 12.5 crore farmer households are supposed to be provided rupees 6,000 each, which requires an allocation of rupees 75,000 crore only. Now, sir, children welfare, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन तो है ही, हम लोग भी चाहते हैं बेटी को बचना चाहिए, बेटी मर रहा है इस देश में ज्यादा। तो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए रुपीज 5,700 crores less than what was budget. Nothing has been done to help children cope the devastating effect of closure of schools and आंगनवाड़ीज वर्कर 20 साल 25 साल से 75 में 1975 में शुरू हुआ। मैं भी CDPO थी, इस नौकरी करती थी इस डिपार्टमेंट में। तो अब से लेकर आज तक आंगनवाड़ी वर्कर का क्या हुआ? 20 साल नौकरी करने के बाद, काम करने के बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 200, 100 बढ़ाते हैं। सर, STSC वेलफेयर उसमें भी कमियां हैं। आप देखिए जो मिड डे मील का जो था, रेज एलोकेशन फ्रॉम रुपीज 10.234 crores डिस्पाइट ऑफ 35% ऑफ चिल्ड्रन नॉट रिसीविंग मिड डे मील ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। सर, नारी शक्ति के बारे में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी वुमेन है, हम लोग बहुत सारी आशाएं है, बहुत कुछ करेंगे। नारी शक्ति अपग्रेडिंग 2 lakh अंगनवाड़ीज, but allocation is frozen at the revised estimates rupees 20,000 crores only. Sir, 1 minute. Jarna ji, conclude please. LPG subsidy also कभी आए 60% पहले है और 60% कार्ड has been inflated budget 2022-23. Now new allocation has been budgeted for the unorganized workers who were registered through e-SARM portals. Sir, therefore,
The budget 2022-23 has completely failed in identifying the priorities to provide relief for the common people. It is a betrayal. Thank you. Thank you. Now, the next speaker, Dr. M. Tambidurai. Thank you, Mr. Vice Chairman, sir, giving the opportunity to express my views on the budget. At the outset, I want to tell, sir, our ADMK coordinator, O. Pannirselvam, and also joint coordinator, Edappadi Palaniswamy, on Wednesday said that union government would generate renewed hope among the people. That is our party stand. There we are supporting this budget. So I rise to register the views of my party, All India Anna DMK party, on the present budget presented by the Honorable Finance Minister. First of all, I appreciate the enormous measures taken by the government of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji to protect the economic interests of the country during the fearful pandemic, which has devastated the dreams and aspirations of many of all over the world. In the impact of lockdown and subsequent negative growth in the economy is felt by the countries of the world without exception. Few individuals and enterprises have gained, no doubt, but by and large, almost 90% of all industries and manufacturing units, including agricultural sector, have terribly affected and will or still not sure when it will get out of this darkness. So in spite of gloom and despair all around us, the government of Honorable Prime Minister Modi had reasonably done well in safeguarding our economy. My heartiest congratulations for what have been done and best wishes for the more power to the Prime Minister. Coming to the budget 2022-23, I am come across a survey conducted by independent services involving more than 40,000 respondents residing in 342 districts of India. The survey has indicated that 20% of citizens are thrilled with the budget and they see many benefits ranging from infrastructure growth to boosting spending and creating employment. 40% believe it will derive progress in at least our area. At the same time, sir, the absence of personal tax relief has been disappointing to a sizable percentage of survey persons. That is the answer. I am appealing the Honorable Finance Minister to consider this. As our Reddy also said, speaking, this inflation is more, but our the income tax that when we are charging is still we are continuing that. Well, if you, madam, if you allow, give more concession, the consumers, the taxpayers, definitely they will spend money that will circulate in the growth, definitely. Therefore, you have to take the opportunity to give, see, that exemption must be, that tax rate, that level has to be increased, that personal tax. Sir, and also, the Finance Minister has said in the budget speech that the productivity-linked incentive in the sectors for achieving the vision of Atma Nirbhar Bharat has received an excellent response. Madam Nirmala Sitaraman mentioned that there is a potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of rupees 30 lakh crores during the next 5 years. I earnestly hope that ambitious plan comes true. India is now the factory of the world. India is now the laboratory of the world. India is now the hub of the young in the world. More than 50% of our population is young population. We have to make use of this wonderful resource which most countries do not have. The resource of human power is more important. Our young generation is getting good education, great mobility, and above all, our youth are full of aspiration and dream
to have a better tomorrow for them and to their family. Hence, I please make sure that you are complete your target of 60 lakhs of new jobs. Create new mechanism to find jobs opportunity for our youth all over the world. It is not a brain drain by conquering. The world is through this, our skill labor. Sir, I would like to specially mention about the Prime Minister Gati Shakti, the 7 engines you have identified, namely roads, railways, airports, mass transport, waterways, and logistic infrastructure are the need of not only today's, but India, also tomorrow's India. With effectively and timely implemented, these 7 engines of Prime Minister Gati Shakti will transform our economy. They will provide seamless multi-modal connectivity and effective logistics, which India is badly in need of. Sir, our finance minister is very thought of presenting the budget. Even though there are elections in the different states, it's not tempted her. Here she is come forward to put a realistic budget. As our Reddy said previously, she is the daughter-in-law of Andhra Pradesh, but she is daughter of Tamil Nadu. I think definitely she will help more Tamil Nadu, giving more schemes. That is my expecting that way. That is there. I think our budget will at us come. Sir, Finance Minister has announced that 7 lakh crore in capital expenditure and increase of 35% to bring the flagship economy back to the pre-pandemic level. There has been some attempt to assure farmers by committing rupees 2.37 lakh crore to produce wheat and paddy from 16.3 million farmers. The perennial problem in India is implementation. Large sums are allocated and grand schemes are announced, but they do not get spent as budgeted. The government is also outlined a blueprint for Amrit Kal, the next 25 years until the centenary of Indian independence of 2047. This is a laudable goal. Sir, I want to bring certain projects. For example, the Modi government has been working with the different models of public-private sector partnership and is constantly reviewing model concession agreements for the various modes of road construction of PPP. I was also Transport Minister, sir, you know, very well, Vajpayee government taught this subject. But I am requesting Honorable Finance Minister to see that Tiruchirappalli, Karur, Coimbatore has maybe linked through 8 ways. That project is conceived already. Because when you are coming roads like that, the Tiruchirappalli connecting Coimbatore, you make 8-way road, within 2 hours can reach from Coimbatore to Tiruchirappalli, connecting airport to airport. Therefore, that is an important subject which we are requesting you already. I requested our Transport Minister, accept the project. Project is now in the government. They have to allocate the money and spend it. And also, sir, regarding the railway thing, the other big infrastructure push for fiscal 2022-23 will be for the railways, which is getting up to carry 8,595 million passengers, almost 2.5 times the number it carried in the previous year, apart from the ferrying 1,470 million tons of cargo. Sir, regarding here also, I want to request my area, Jolarapete, Bargur, Krishnagiri, Hosur, your Bangalore, has to be connected. Already the project is announced. Because I am very thankful for the Finance Minister. She announced that Hosur area, this area is industrial, that is our defense corridor. When the defense corridor, we require that kind of railway infrastructure. Therefore, connecting Bangalore to that rail will go up to Puducherry. 3 states will be connected. Pondicherry, Tamil Nadu, and Karnataka will connect this kind of scheme. Therefore, please consider it and allocate the money. So, regarding the same way, sir, airports,
Airports are nothing pillars, we said. You know very well, you are in Karnataka. We have to come to Hosur means we have to spend 3-4 hours to reach the airport. Therefore, our demand is to have an airport in Hosur. Hosur is already is private. Tanija airport is also there. They are ready to give for lease. And also it is Udan structure already accepted. Therefore, even the state government already given the tender. I appreciate that what they have done. Therefore, I request the finance minister to see that to bring the airport for that Hosur, that will give faster boost the development of that area and also connecting the congestion in the Bengaluru airport, that will help us. That is the thing, sir. So another, regarding... you have another 2 minutes, sir. Sir, okay, sir, I'm going to conclude that. Sir, apart from that, sir, generally, I have seen the newspaper, when we are more interested to internal security. As we are allocating defense, you have to allocate more for Home Ministry also. The Home Ministry must see that law and order, even though state subject, they have to give more money to state governments. Then only they can do. Modernization more important. But at the same time, news has come, sharp fall in police exam revamped funds, as many states fail to utilize them. That is the, it has come. But if at all states are utilizing, center you spend it. Your IPS cadre is with you. You modernize them and they depute them. We have no objection. Therefore, in turn, now, because of the law and order, many places we are facing the country deteriorating. So, there are thefts are going, child abusing, and women's insurgence and security. There are so many things. As you are giving important defense, you have to give the home, you have to save the lives of the citizens of this country. For that, you recover the budget must be given more allocation for the modernization of this police force. And the centers to come forward. Without centers, the state government cannot do that. And also states, sir, you know GST, after coming GST, most of the funds come to the central government. Central government is telling, yes, they are getting lakhs of crores of rupees every month, go on increasing. What about the states? The states are not getting sufficient fund. That is, since your madam is telling it, but because we after coming GST, I know, our party ADMK is opposed to GST. And we have not voted for at that time. It is brought by the Congress. This they have only brought. Is now we are suffering. That is why the sources of the state governments are going down. Therefore, it has the high time to see that central governments to come forward to give more allocation. And also arrears. The GST arrears, lot of arrears state governments are paying. Tamil Nadu especially is also facing. Therefore, I request the Honourable Finance Minister to see that this can be, I'm going to conclude, sir. Sir, I like this. Finally, I want to say, our Honourable, I welcome the emergency credit linked guarantee scheme extended by up to March 2023. The 2 lakhs crores additional credit for MSME is very much needed during the pandemic situation. You have promised many more incentives and inputs to agriculture and other essential sectors. I wish you keep your target and time schedule to complete and fulfill your promises. With these words, I wholeheartedly welcome the budgets presented by the Honorable Finance Minister, daughter of Tamil Nadu and daughter of the nation of India, to see that justice been given. And I once again congratulate for Prime Minister Modi ji has given entrusted her to present this budget. I thank once again. Thank you, Tamidore ji. The next speaker, Shri Sukram Singh Yadav. सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी को, जिन्होंने इस देश के बजट को पेश किया और एक महिला के रूप में पेश किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब एक महिला बजट पेश करती है तो उसकी तरक्की घर में भी होती है और घर से बाहर भी होती है। मुझे ये भी मालूम है कि इस देश की महिला वित्त मंत्री आगे देश की प्रधानमंत्री बनी, ऐसी जानकारी मेरे पास भी है। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। महोदय, बजट जो पेश किया गया है
उसके बारे में मुझे कहना है कि इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने किसानों के बारे में दो चर्चा की है। ये सही है कि जैविक खेती को बढ़ावा देंगी, ये अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा जो ड्रोन से जो खेती होगी उसमें भी इसका लाभ किसान को मिलेगा। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और इसमें शिक्षा का अभाव रहा है। आज गांव के लोग ड्रोन से खेती करने में कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, उनको क्या उसको लाभ मिलेगा, शिक्षा का अभाव है, इस कारण उनको कैसे जानकारी होगी। मैं समझता हूं कि ये विषय मेरी सोच से परे है कि कैसे इसका लाभ उन्हें मिलेगा। जहां तक माननीय मंत्री जी ने किसानों को सुविधाएं भी बढ़ाई हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि इस देश में एक बड़ा किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जाने कितने हमारे किसान साथी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जीवन चला गया, लेकिन बजट में उसकी चर्चा कुछ होनी चाहिए थी, उन्हें कुछ सहायता मिलनी चाहिए थी, उसका अभाव मुझे दिखता है। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इनकम टैक्स के बारे में बड़ी चर्चा थी कि इसमें कुछ इनकम टैक्स सीमा बढ़ाई जाएगी और लोगों के मन में विश्वास था हर बार इनकम टैक्स सीमा बढ़ती, इस बार भी बढ़ेगी। लेकिन लोगों को निराशा से हाथ लगी कि सीमा बढ़ी नहीं, लोग इंतजार करते रहे। जहां तक महामारी का प्रश्न है, भीषण महामारी में पूरा देश ने, पूरा विश्व चपेट में आया और इसलिए आर्थिक व्यवस्था चरमराई, हर देश की चरमराई, हिंदुस्तान की चरमराई, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन उसके आधार पर ऐसी योजनाएं बननी चाहिए थी ताकि उस अर्थव्यवस्था को हम ठीक कर सकें और भविष्य में उसका लाभ हमें मिले। एक बात और कही गई है, जो नई करेंसी चलाई जाएगी उसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी। मैं समझता हूँ, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे देश के लोग में शिक्षा का अभाव है देश में, इसलिए जब तक हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे लोगों को, इन दोनों करेंसियों का लाभ देशवासियों को नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक मैं खेती के बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे घाटे का सौदा किसानी है, खेती है। किसान जब खेत में काम करता है तो दिन रात मेहनत करता है, इसके बाद में भीषण ठंड में पानी लगाता है खेत में और भीषण गर्मी में फसल को काटता है, मारता है, तब जाकर कहीं उससे गल्ला निकलता है और गल्ले को बेच करके अपना काम चलाता है। लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं कि देश में की गई ताकि किसान को जो उसकी आमदनी है, जो उसका श्रम है, श्रम की कीमत कहीं नहीं लगाई गई। मैं समझता हूँ दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में किसान के श्रम को बेकार समझा गया और उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। जब तक किसान को उसके श्रम की कीमत नहीं लगाई जाएगी, उसके साथ नाइंसाफी होगी। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि छोटे किसानों को लाभ देने की योजनाएं कोई नहीं रखी गई बजट में, वो आनी चाहिए थी। ये बड़े किसानों को लाभ बहुत योजनाएं रख दी गई। मैं समझता हूँ कि बजट में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे रास्ते पर आएगी, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर बहुत से लोग आए, उन्होंने इसके सुझाव अच्छे दिए। मैं समझता हूं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस बारे में सोचेंगी और अर्थव्यवस्था को पटरी में कैसे लाया जाए इस पर विचार करेगी। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं कानपुर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, और कानपुर में मैं समझता हूँ औद्योगिक क्षेत्र है कानपुर, लेकिन अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि उद्योग धंधे बंद होते चले जा रहे हैं, कुछ कोरोना के कारण और कुछ महंगाई के कारण। जो हमारा कानपुर चमड़े के और कपड़े के उद्योग में प्रमुख माना जाता था, आज कपड़े वाला काम पूरा बंद हो चुका है। चमड़े वाली चर्चा अभी है कानपुर की, लेकिन उसमें भी जो बढ़ावा होना चाहिए था वो बढ़ावा नहीं दिया गया, इस कारण वो भी कार्य पिछड़ रहा है। दूसरी बातें मैं कहूँगा कि जो चिकित्सा का मामला है कानपुर का, चिकित्सा में
ऐसे अस्पताल तो बहुत है, टीबी का अस्पताल है, हृदय रोग है, कैंसर का अस्पताल है, लेकिन कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो जैसा सारे सुविधाएं हों उसमें पीजीआई जैसा अस्पताल कानपुर में नहीं है। जबकि कानपुर आबादी के लिहाज से प्रदेश का बड़ा शहर है और मजदूर कानपुर में बहुत रहते हैं। उन सब के हिसाब से कानपुर में पीजीआई एमईआर जैसा कोई अस्पताल सुपर स्पेशलिटी का बनाया जाए ताकि कानपुर के लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा बजट के माध्यम से। और इसी के साथ साथ जो कानपुर देहात है, जो कानपुर नगर का ही अंग है, अब कानपुर देहात हो गया। कानपुर देहात में मैंने देखा कि मेरे सामने ही कानपुर देहात बनाया गया, लेकिन आज 32 साल हो गए कानपुर देहात बने हुए, ना नाम तय हो पाया उसका। नाम कई बार बना फिर बदला गया, आज उसका कानपुर देहात के नाम से लोग जानते हैं। और उसमें सबसे दिक्कत इस बात की है कि कानपुर देहात में उसका मुख्यालय नहीं था। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आज से 32 साल पहले मुख्यालय बनाया माती में, लेकिन मुख्यालय तो बन गया, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए एक जिले की, वो सुविधाएं आज भी वहाँ प्राप्त नहीं है। मैं समझता हूँ वहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा रेलवे स्टेशन की नहीं है। रेलवे स्टेशन के नाम पर यहाँ पहले लगा हुआ था टोल टैक्स, जहाँ वसूली होती थी, उसका सारे चेंज कर दिया जाएगा तो इसका लाभ कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों को मिलेगा। और कानपुर नगर से लोग आएंगे भी, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कानपुर देहात सीमा के बाहर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी जगह टोल टैक्स लगा रखा है, टोल वसूली का केंद्र लगा रखा है, जिससे गांव के लोगों को जो आने जाने में है उनको असुविधा होती है। ये मैं आपसे इस माध्यम से बजट की भाषण में मैं आपसे मांग करता हूँ, ये व्यवस्था भी आज कर देंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस सरकार ने की, ये अच्छा काम किया। हम लोग पहले ही मांग करते थे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन चिकित्सा का जो अभाव कानपुर नगर में जिस प्रकार से है, उस पर कानपुर देहात में भी है। मैं चाहूँगा कि नगर और देहात दोनों सीमाएं जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसा अस्पताल बनवा दीजिए कानपुर में ताकि दोनों जिलों को उसका लाभ मिले। और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा काम हो जाएगा, सबका सम्मान बढ़ जाएगा, आपका सम्मान ही बढ़ेगा। और मैं एक बार फिर आपको बजट आपने पेश किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Sukram Singh ji. The next speaker, Shri A.D. Singh. Singh ji, you have 5 minutes. I may exceed 1 or 2 minutes that you can cut from him. If he is cutting, I have no problem. If your party is giving, no problem. ये सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस स्वदेशी मंच ने भी कहा है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। ये 2019 के फिगर में 3 करोड़ था और करीब 15 मिलियन हर साल और उसमें जुड़ा जा रहा है। और अभी तक तो हम लोग कांग्रेस के टाइम में पंचवर्षीय योजना की बात करते थे, बट मुझे लगता है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री फाइनली इज हैप्पी विद द नेहरूवियन मॉडल that we should go back to planning. So instead of 5 years, they are saying 25 years. That is one. And secondly, the huge amount of tariffs that used to be there in the 50s and 60s, same they want it this time also. The budget, I don't want, most of my colleagues have already spoken about health and rural development and everything else. So I don't think I'll take the time of to speak on those, except that the capex which has gone in the infrastructure, I don't think they will be able to spend it. Maybe they have allotted that much to clear backlogs, for example, for NHI or something. Now I'll come straight to Atmanirbhar Bharat. Government is, whether it is our Honorable Prime Minister or the ruling party members of talking of Atmanirbhar Bharat के लिए लोग का केवल लिप सर्विस है। अब आपको इस विषय में बताता हूँ। Doing business in India is governed on the aggregate by as many as 1536 law, which on the aggregate requires 69,233 compliances. The laws are both central and state laws. These are 678 central laws that require 25,537 compliances, 858 state laws that require 43,696 compliances.
These are okay with the big corporates, but for the medium industry and the small industry, वो काम क्या करेगा? Many of these laws and compliances, prison sentences are there. In fact, imprisonment clauses run into hundreds as follows. 244 central laws and 25,537 compliances have imprisonment clauses. 599 state laws and 20,895 have imprisonment clauses. I will request the Honorable FM and the Corporate Affairs Minister to set up an independent group to simply calculate the cost, both direct and indirect, in terms of time spent, for example, of the required compliances in respect of various group of industries. अगर ये इस तरह का compliance में ही हमारा time बीतेगा, तो हम business क्या कर पाएंगे? और जब हमने टैरिफ कम किया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है. This is also the time of economic diplomacy. काफी मेंबरों ने कहा कि 1 लाख करोड़ डॉलर का इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है. बिल्कुल चिंता का विषय है. मगर अगर फर्ज कर ले कि आज हम 1 लाख करोड़ को 30 लाख करोड़ का बायलैटरल ट्रेड कर दें, कि 15 लाख करोड़ हमारे यहाँ से जा रहा है, 15 लाख करोड़ का उनके आ रहा है, तो 1 मिनट में उनकी पॉलिसी पाकिस्तान विज़ चेंज हो जाएगी. बिकॉज टुडे इज द डे. अब फर्टिलाइजर पकड़ लीजिए, the amount of mess they have created in the fertilizer sector. ईरान से हमारे यहाँ 50% यूरिया आता था जब यूरिया का प्राइसेस $300 के आसपास था. इन्होंने यूएस के डर से ईरान से लाना बंद कर दिया, यूरिया प्राइस $1000 हो गया. तो हम डरते क्यों हैं? We are very clear that we respect UN sanctions, not US sanctions. Today the same thing is happening in potash. The Americans are saying that we will put sanctions on the Russians and the Belarusians. We are quiet. Nobody is interested. तो और आप ये देखिए, जब 30 साल तक तो हम एम्बेसडर और Fiat 30,000 बनाते रहे. जब वो सेक्टर खुला तो इनफैक्ट उस समय पीलू मोदी जी ने बोला भी था कि हमारे पास 2 कार ऐसे हैं जिनका हॉर्न छोड़ के हर चीज बजता है. तो जब वो सेक्टर खुला तो टुडे वी आर exporting 4 lakh cars, and if we add commercial vehicles like scooters and everything, it is almost 30 lakhs. So हर भारतीय बिजनेसमैन बिल्कुल सक्षम है. जब तक इन कंप्लायंसेस को आप लोग नहीं हटाइएगा, हम लोग उसी में रह जाएंगे. अब दूसरा डिपार्टमेंट का ले लीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. इनकम टैक्स में अगर आप पर इंक्वायरी हुआ तो 1-2 साल में उसको एज पर लॉ ठीक कर देना है, फाइन लेना है या जो भी करना है. एनफोर्समेंट डायरेक्टर आपके यहाँ आ गया तो आप समझ लीजिए कि 20 से 25 साल तो इंक्वायरी में बिताएंगे वो. उसके बाद 10-15 साल वो केस लड़िए. तो बेसिकली अगर आप 40 साल के हैं तो 80 साल तक है. और जिस दिन आपके घर आएंगे पूरे समाज में आपका बेइज्जती हो जाएगा. इन माय पर्सनल केस देयर इज अ इंक्वायरी गोइंग फ्रॉम 2010, and when my friends asked what is happening to that, I said till I die I'll be under inquiry or either in the court. तो सारे बिजनेसमैन को तो आप बंद कर रहे हैं. पिछले 5-6 साल में मैंने 600-700 करोड़ टैक्स दिए होंगे, मगर मैं चोर हूं बहुत बड़ा. तो या तो इंक्वायरी कर, हमने तो जो प्रेजेंट ईडी चीफ है इनके पहले जो थे उनको जाके हाथ जोड़ के बोला था मैंने कि मुझे चार्जशीट कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं कोर्ट में लड़ लूंगा. तो अगर हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने तो सबसे पहले कंप्लायंसेस हटाइए. और ये कंप्लायंसेस इज ओके फॉर द बिग कॉर्पोरेट्स, दे हैव टू मच ऑफ स्टाफ. बट जो मीडियम इंडस्ट्री है वो कर रहा है उसके लिए कीजिए. तो आप इतना कानून बनाइएगा तो कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा. करते रहिए आप लोग, लिप सर्विस करते रहिए. आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गया है? Conclude, Singh ji. Just give me 1 minute. I wish to make it that we are not going to become Atmanirbhar by erecting barriers around us, but opening up. In the 1990s, it was famously said that each time we reduced import tariffs, our export went off. We as businessmen are not scared of or shy away from competing with China or any other country. We will take them on. Just liberate us from the excess and excesses of domestic laws that divert our time and attention and resource from the business of doing business. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. A.D. Singh ji. Now, the next speaker is Dr. Narendra Jadhav.
No, no, you can sit and speak, no problem. Thank you. Thank you, Vice Chairman, sir. I rise to strongly, or I sit to strongly support the budget 2022-23. I wholeheartedly commend the Honorable Finance Minister for giving the nation a visionary budget aimed at inclusive and sustainable economic growth and development of the Indian economy. Vice Chairman, sir, a budget is supposed to strike a balance between economic acumen and political sagacity. The Finance Minister has struck a fine balance between the two. It is a no-nonsense budget reflecting professional integrity of the highest order. Every budget is always meant to be a contextual one. There are two overriding or dominant considerations that seem to have weighed on the Honorable Finance Minister's mind. First, the Indian economy has staged an exceptionally smart recovery, posting 9.2% real GDP growth, rising from the depth of the unprecedented corona pandemic. And the second, financial year 2023, that is the next year, it marks the beginning of the Amrut Kal, when our nation will be transiting from India at 75 to India at 100. Both of these considerations, sir, call for laying a solid foundation for India at 100. And in my view, this is precisely what the Honorable Finance Minister has achieved in this budget. I call this budget a visionary budget because it effectively translates into action the great vision given by Honorable Prime Minister while addressing the nation on 15th August 2021. Sir, before I go into the heart of the budget, please allow me to point out some bloopers and blunders that were committed by some of our esteemed colleagues while speaking in this August House yesterday. First, I'll take on Shri Jawahar Sarkar. Shri Sarkar emphatically argued that the proposed expenditure on education as the ratio of GDP in the budget is only 1% of GDP. This is completely wrong. Even in 1951, we had a greater amount of expenditure, public expenditure on education. Actually, sir, the proposed expenditure on education is around 4% of GDP, not 1% of GDP. I would urge my learned friend to get his facts straight and not mislead this August House. Secondly, nominal GDP is expected to grow at the rate of 11.1% in the next year. Economic survey, again Mr. Chidambaram quotes, that the real GDP growth in the next year, that is financial year 2022-23, is expected to be 8%. He then questioned the finance minister and he said, does it mean that the inflation in India in the financial year 22-23 is going to be only 3.1%? That 3.1% comes from the difference between 11.1% nominal GDP growth minus the real GDP growth of 8%. According to Sri Chidambaram, only one of the two numbers are right. One of the number has to be wrong. Either the nominal GDP growth number is wrong or the real GDP growth number is wrong. Not really, Chidambaram sir. The difference between nominal GDP growth rate and the real GDP growth rate is not CPI inflation, it is not WPI inflation. The difference between the two is actually the widest measure of inflation called GDP deflator. And the inflation based on GDP deflator, which is embedded in this budget of 3.1%, is perfectly feasible. Why? Because the average inflation rate based on GDP deflator, and I have worked out for the last 5 years ending the pre-COVID year of 2019-20,
it turns out that the average inflation rate based on GDP deflator in our country is 3.15%, which is not very different from 3.1%, which has been incorporated in the present budget. I am really surprised, in fact, appalled that a person who has been a finance minister for a long time can make such an elementary mistake. Chairman, sir, to my mind, the most important thing about this budget is that priority has been given to economic growth over fiscal consolidation. For financial year 21-22, that is the current financial year, Honorable FM had budgeted lowering the fiscal deficit as a ratio of GDP from 9.2% to 6.8%. And the Honorable Finance Minister has nearly succeeded in hitting that target, achieving that target, posting a revised fiscal deficit of 6.9% instead of 6.8%. This is excellent fiscal marksmanship. And for the year 22-23, sir, the Honorable FM has placed a budget estimate at only moderately lower level of 6.4% of GDP. Some members questioned this and said that this number is also very large, and when last time we had fiscal deficit of such large magnitude, we had an unprecedented crisis of 1991. These critics forget that during the 1991 crisis, it is true that fiscal deficit was very large, but at that time, our foreign exchange reserves were only $1 billion. Sir, today, our foreign exchange reserves are $630 billion US. The situation is not comparable at all. Vice Chairman, sir, this avoidance of a sharp reduction in fiscal deficit as a percentage of GDP, especially against the backdrop of buoyant tax revenues, and that too in GST, unmistakably it implies greatly enhanced public expenditure. The best thing about this budget, sir, is exceptionally large increase in capital expenditure to the tune of as much as 7.5 lakh crore. And of this enhanced capital expenditure, again it is noteworthy that as much as 43.3% is being devoted to building world-class infrastructure of roads, railways, and so on. The strategy underlying this budget is very clear. Sharply increase public investment would entice greater private investment. It would create more jobs, more income. In turn, that would create larger consumption demand. And to meet that demand, there would be more production, and therefore there would be more jobs. This virtuous circle will lay down the foundation of a sustained economic growth as the India transit at India 75 makes a transition to India at 100. A question is being asked, sir, in some responsible quarters, why has the finance minister refrained from giving a big push to consumption, say through cut in direct taxes or through consumption vouchers? It is argued that increasing purchasing power in the hands of people would raise the consumption demand, it would mean greater production, and it would promote economic growth. Please conclude, sir. Yes, one more minute, sir. The Honorable Finance Minister does not seem to have accepted this logic. To my mind, sir, there are at least two reasons at this point of time to prefer investment-led growth to consumption-led growth. The two reasons being, the first is the number of social safety measures which were taken during the second wave of corona pandemic has been very large. Recall the 5 mini budgets to mitigate the devastating impact of the pandemic, some of which in fact are continued in this budget. More importantly, while both virtuous cycles, while both virtuous cycles, sir, your time is over. 30 seconds, sir, 30 seconds, please. While both cycles, one consumption-led and other investment-led, both are correct in principle, the virtuous cycle of investment-led growth is much stronger than the virtuous cycle of consumption-led growth.
It is important to recall that economic theory talks about investment multiplier. It doesn't talk about consumption multiplier. In other words, the durable impact of enhanced public investment is much stronger than equally large increase in consumption expenditure by government. I strongly endorse this budget 22-23. Thank you, Vice Chairman, sir. Thank you. The next speaker, Shri Birendra Prasad Bhaisya. Sir, you have 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. On behalf of my party, Assam Gana Parishad, I raise here to support the bill, sir. My time is very short, but I have to speak on a long budget, so it is difficult to conclude within the 5 minutes. I request you kindly consider, if possible for your end, kindly consider extend some more time, sir. Madam Finance Minister, I compliment you. In this critical time, you perform a good budget. Because election of the UP, election of the other state is knocking the door, people in general thought that your budget will be focused on to get vote in election, but you are not doing this thing. This budget is a growth-oriented budget. In your speech, Madam Finance Minister, you have said, we expect in coming year, our economic growth is going up to 9.2%. In this critical time, it is a very good, it will be very good growth, and definitely with this growth, now we can compare other development country in the growth area also. Sir, Prime Minister took lots of initiatives for the infrastructural development, socio-economic development of our country, sir. PM Gati Shakti is transferable approach for the economic growth and sustainable development. The approach is driven by the 7 engines, namely roads, railways, airport, ports, mass transportation, waterways, etc. In infrastructure, this budget has given lots of opportunities. Near about 25,000 crore is going to spend in the coming year for the expansion of the national highway, about 25,000 kilometers. This is a welcome move, sir. For railway also, we have taken lots of initiatives, sir. Sir, from budget we have seen, government has decided to expand the capital expenditure more than 30%, sir. When capital expenditure is going to increase, sir, definitely new railway project, new ports, new infrastructure project is coming up, sir. It will create, sir, job opportunity to our country, sir. Madam Finance Minister, in her budget, she said government has estimated to employ near about 60 lakhs people in this financial year. This is a welcome move, sir, because unemployment is a great issue for all of us, sir. We are everybody concerned about this issue, sir. Definitely, sir. I am sure, sir, this approach will be helpful to curb the unemployment in our country, sir. We salute to our farmers, sir. During this world COVID time, our agricultural products increased by 30%, sir. And during this world period, sir, our horticultural production also increased by 33%, sir. And government lots of initiative to helping the farmer also, sir. Government is going to spend 2 lakh
270 lakhs crore rupees for the direct payment for minimum supporting price given to the farmers, sir. With this price, the government is in 2021-22, the estimated procurement for paddy and kharif in 2021-22 will be covered 1,208 lakhs metric tons, wheat and paddy from 163 lakhs from 160 lakhs farmers, sir. So it will be definitely helpful, sir. Sir, always from our budget, we are allocated lion's share to the defense sector, sir. And sir, developing country like USA, like France. Please conclude, sir. So give me 2 minutes more, sir. They are take our money, sir. We have already imported our equipments from the foreign countries, sir. For the first time in her budget, Madam has said 60% of the defense equipment produced by the country itself. This is a very welcoming, and in this regard, Madam has given priority in the research and development with combination with the DRDA, the research and development. This strategic will be helpful for us to produce our own product in defense sector, sir. Sir, one more. Now, tea industry of the country, sir. Tea industry of the country, Please tea conclude, industry sir. have a great role in our economy, sir. We earn huge foreign exchange for the tea industry, sir. And tea industry of the country today facing lots of problems, sir. In this year, sir, tea production in country is declining, sir. Not only that, sir, in international level, we are facing lots of problems with the lots of problems with the tea, Kenya, tea from Kenya, tea from other countries, Sri Lanka, sir. Madam Finance Minister, looking after this region, could you help us? Could you allot some money for development or survival of the tea industry of our country? Shri Binay Vishwam. For in the interest of tea industry, Madam will consider this. Thank you, please. Thank you very much, sir. Shri Binay Vishwam. Thank you, sir. Sir, it was in 1998 that the book appeared before the world by George Soros. He came from the same creed of the ruling class. The book was titled The Crisis of Global Capitalism. It was the beginning of a right-wing intellectual, himself is a big investor, wrote about the crisis. That crisis is increasing today. This budget of the finance minister was a very poor attempt to hide that crisis and to claim that the government has made something great. I feel very sorry for her. Sir, she may be the daughter of Tamil Nadu or daughter-in-law of Karnataka, but I believe personally she is a lady with integrity. That I respect her. But her budget, I should say, is a failure budget. Sir, everyone of us know, in this budget, the poor are forgotten. In the beginning of the neo-liberalization age, we had a great theory. That theory was trickle-down theory. Everybody knows the meaning. But this budget reflects a triple-up theory. Not for the poor. This budget is for the rich at the top. Whatever step it was seen. I don't want to bring the data here anymore. It was amply mentioned here. Sir, what is there in the budget for the poor, for the workers, for the women, for the peasant, for the MSP, for the health sector? Nothing is there. There, the allocation is slashed. Subsidies slashed. But for the poor, this is the situation. For the rich, you can see the budget was all in favor of them. And our Prime Minister was telling the other day about great weights about the poor people, the migrant laborers. What they have got from this budget. The government
was the reason for the great pitiable scenes that we saw on those days. They were in thousands, starting from their workplace to their villages. He accused the Congress party for that. But sir, was it the Congress party who did the lockdown with a notice of 4 hours? Sir, was it the Congress party who did talk about the Lakshman Rekha? Sir, my party has a lot of criticism against the Congress party, no doubt. Congress was the party that began this disastrous policy of the economy. We know it. But the Prime Minister and his party, the BJP, they do it in a much harsh manner, disastrous manner. That's what we see. Always this government talk about Vivekananda. So let me quote from Vivekananda. There can be no dogmas and preachings for a hungry man. No amount of preaching about gods can satisfy his hunger. He needs to be fed with bread. That bread was denied for him by the BJP government, by lockdown. That was the reason for that tragedy of this. So how can this government forget those seen in the rail tracks of Aurangabad? The people were hit by a train and killed. Do you remember that? And budget forgotten them completely. Completely forgotten them. Sir, once I heard the Prime Minister talking loud about the wealth creators. He said that the government will support the wealth creators. And who are the wealth creators for the government? It was mentioned here. For this government, wealth creators are Adani, Ambani and Tata Birla type of people. He mentioned about Tata Birla on the left also. That once upon a time we shouted Tata Birla government. Yes, we shout today. This is a Adani, Ambani government, a Tata Birla government, a government which surrendered the Air India to Tatas with a paltry cost. This is the government of the exploiters. We have no doubt about that. And that government should not forget certain facts. Sir, the real wealth creators, who are they? The peasants. They created the wealth. They are feeding us, the workers, the beggar laborers. All those wealth creators are forgotten, and all the exploiters. Sir, I don't want to go back again to the figures. Ample of them are with me, but you have rung the bell. Sir, the ecosystem was the word she was using always. Ecosystem. The ecosystem of the economy is shattered by the carbon emission from this government. So the ecosystem cannot be saved with this level of emission of carbon from the financial policy of this government. It has to be protected. That is the need of the hour. I think my party believes that BJP cannot do it. It's a party which preaches a lot for the poor, but that's a party which acts only for the rich. And that rich will not save this country. They are only concerned about their profits and that alone. Sir, the words of Pope Francis is very important today for the whole world. I respect him. The world respects him. Our Prime Minister invited him to India also. We all wait for him to come to India. Pope Francis once told, the marketplace by itself cannot resolve every problem. Madam Finance Minister, please remember it. However, much we are asked to believe this dogma of neoliberal faith. Whatever the challenge, this impoverished and repetitive school of thought always offers the same recipes of neoliberalism. Mr. Bishop, please conclude. Sir, please. Your time is up. Neoliberalism simply reproduces itself by resorting to the magic theories of spillover or trickle without using the name as the only solution
to social problems. Trickle-down theory is... Okay. I am calling the next speaker. Now, last part. Sir, let me quote from Karl Marx also, one sentence, one part, very important. Because Thank you. Thank you. Sir, Marx is the... Thank you. The next speaker is Kapil Sibal. Kapil Sibal. Marx is the... Sir, please. Marx is the philosopher of tomorrow and today. Yes, please, yeah. I just want to make sure I heard it right. Did Honorable Member Vinay Vishwam first quote Pope Francis and immediately after that is quoting Marx? I just want to be sure. Sir, if you give me 2 minutes, I can explain properly, effectively, and she will be convinced. You will have another opportunity later, but now you conclude because I have called yes, Honorable Sir, next member I have called already. Which is a very pertinent question, I have to respond to it, sir, please. Nothing will go on record now. I have already called the next speaker. Sir, please. Mr. Kapil Sibal. Sir, please, a bit more democrat, please. A bit more democrat, please. 1 minute. 1 minute. Madam, why I quoted Marx after Pope Francis? No. You need not reply to her. You need not reply to her. You conclude. Half a minute. The bourgeoisie has stripped off its hollow every occupation hitherto honored and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science into its paid wage laborers. I would add, it has the governments also. Not Kapil Sibal's speech will go on record now. Please. मैं आपका और अपनी पार्टी का आभारी हूँ कि आज इस बजट पे जो चर्चा हो रही है मुझे उस पे बोलने का मौका मिला। मैडम, मैडम, Madam, when I was going through the budget speech, so may I just go back and then sort of maybe hopefully... Oh, I come in front. Sorry. देखते हैं तो वो आसमान पे नहीं देखता। कभी देखा आपने कि परिंदा आसमान की तरफ देख रहा है? और जो पशु, जो जानवर जो नीचे जमीन पे हैं, कभी उनको देखा है कि वो आसमान की तरफ देख रहे हैं? कभी नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि असलियत जमीन पे होता है। आप लोग आसमान की तरफ देखते हो, फेंकते हो, सपने फेंकते हो, सपने दिखाते हो। जमीन को देखिए, हिंदुस्तान की जनता के हालात को देखिए। जो एक महिला वो ये सोचती होगी कि मेरा कल क्या होने वाला है, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा बिकॉज यू कैन जगल डेटा बट यू कैन नॉट जगल फैक्ट्स। तो थोड़ा मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आप अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, so World Bank data 2019 says that India had a level of unemployment of 23% amongst the youth. 23%. China unemployment rate in neighboring countries 2020, data by the Center for Economic Data and Analysis based on ILO database, China had an unemployment of 5%, Bangladesh 5.3%, Pakistan 4.65%, Sri Lanka 4.84%, and India 7.11%. This is where we are. This is your shining India, whatever. Now, you have said that I have increased the capital expenditure by 2 lakh crore. That's what you say, to 7.5 lakh crores. So, जो 2 lakh crore है, that is for the purposes of building infrastructure.
बट आपने कभी देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहां है? आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट कहां है? मैं आपको बताता हूं, शायद आप भूल गए होंगे। इंडस्ट्री वाइज जॉब लॉसेस आपको बताता हूं। मैन्युफैक्चरिंग 9.8 मिलियन लॉस ऑफ जॉब्स, होटल एंड टूरिज्म 5 मिलियन, एजुकेशन 4 मिलियन, overall services sector 1.8 million, fall in central government employment 3.32 million. In 2012-13 it's now 3.31 million. Employment in railways 1.27 million. ये तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर हैं। तो अगर आप सड़कें बनाओगे तो वो इन सेक्टर्स का क्या होगा? होटल और टूरिज्म का क्या होगा? एमएसएमई सेक्टर का क्या होगा? एजुकेशन का क्या होगा? ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर का क्या होगा? तो व्हेन यू हैव टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू डू इट सेक्टर वाइज. यू हैव टू गिव देम रिलीफ सेक्टर वाइज. जो आपके सड़कों में जो लोग लेबर आती है वो मोस्टली अनस्किल्ड रहती है. अच्छी बात है कि आपने 2 लाख करोड़ दिया है, उसमें से 1 लाख करोड़ तो आपने लोन दिया है स्टेट्स को, केवल लोन, वो भी 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन. इसका मतलब क्या होगा कि वो पहले तो आप तय करेंगे कि स्टेट को जाएगा, वो ये भी मालूम है कि किन किन स्टेटों को मिलेगा. फिर कई स्टेट चाहेंगे ही नहीं कि आपसे लोन ले, क्योंकि वो टाइड अप रहेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे तो आपकी अनुमति चाहिए. तो ऐसे बजट नहीं बनने चाहते. कल मेरे चिदम्बरम साहब ने 3 W's की बात की थी. अभी हम वेल्थ की बात करते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर बजट हैज नो विजन, नो रियल लॉन्ग टर्म प्लान. एंड लेट मी एक्सप्लेन समथिंग to you, and through you, hopefully the people of India are listening. Anywhere in the world, wealth is created in universities. Wealth is never created by industry. Industry uses the ideas and the innovations that come through young people in the universities and then turn them into goods and services. So if you give benefits to industry, it's not going to create wealth. It is going to create wealth for those individuals, but the real wealth for of the nation will be created in the university system. And let me tell you that, and you'd be really shocked. And the other real wealth created will be on the basis of research and development. What kind of investment do you make in research and development? I'll give you some very interesting figures. That's why countries like America are wealthy, and that's why countries like India are where we are. The R&D percentage of GDP, and I'll not go into that, the US spends, mark the figure, $606 billion every year on R&D. What is our expenditure? And this is on PPP terms. Our expenditure is 47 billion. How is this country going to progress? China spends $514 billion on R&D. Countries like Japan spend 172, and they've got much smaller populations, $172 billion. Germany, $131 billion. France, $63 billion. Now, unless you put money in R&D, how will you create wealth? Unless you give your students the freedom, not the kind of freedom that we have seen in JNU, but the freedom to think, to converse, to have the freedom to decide on what to do, to bring about new ideas. If you go to any university in the United States, most of the universities are funded by the government. And in fact, there are businesses who have built campuses in the university system through their investment, aided by government. Now, if you don't give freedom in education, if you don't do investments in research, you're not going to create wealth in this country. And you've seen it in your 2019 budget. Look at the kind of benefits you gave to industry. Reducing the tax to 25%,
then to 15%. The total tax now for new industry is 17% if you set up a new industry. No, they are not going to create wealth for the country. They may create some jobs. So I think that this nation should realize that unless we invest in the university system, for the ideas, for the IP to be created. What happens in the university system? The IP is created, and then business comes and does prototypes, and after prototypes, they actually see whether it's a viable commercial proposition. उसके बाद फिर वो बनते हैं, इंडस्ट्री में जाता है और वस्तुएं बनती हैं और सर्विसेज होती हैं. अगर उसमें आप ध्यान ही नहीं दोगे तो आप कौन से वेल्थ की बात कर रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी भारी समस्या है. और फिर दूसरी बात कि हिंदुस्तान को मैं समझता हूं जैसे हमारे घरों में परिवार है, हिंदुस्तान भी एक परिवार है. और जो माँ होती है वो क्या सोचती है? हमेशा सबसे जो कमजोर बच्चा होता है ना, हमेशा उसके बारे में सोचती है. और अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो. हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं. इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको आपने? ये बड़े दुख की बात है. और आप बात कर रहे हो अमृतकाल. अमृतकाल, मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं. कौन से अमृतकाल की बात कर रहे हो आप? अब देखिए ना, ये कौन सा आप अमृतकाल की बात कर रहे हो? ये तो राहु, देखिए ना. और फिर असलियत क्या है? आप फिर यहां पे मैंने कल प्रधानमंत्री को मैं बड़ा अचंभा रहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े लोगों की बात की. टुकड़े टुकड़े गैंग. अरे भैया मुझे ये बताओ, जो सभ्यता के टुकड़े टुकड़े करता है, जो इतिहास के टुकड़े टुकड़े करता है, जो संविधान के टुकड़े टुकड़े करता है, जो भाईचारा के टुकड़े टुकड़े करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है. तीसरी बात, आपने ये जो पेट्रोल पे जो अपने एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है इतने सालों में, और आज भी लागू हुआ है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है. मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था, और जनवरी 2022 में वो 95 रुपए है. सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपए पर लीटर, और आपने 27 रुपए कर दिया उस पे एक्साइज. कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%. डीजल पे 55 रुपए उसका दाम था पर लीटर, उस पे एक्साइज थी 3.46. आज दाम है 86 रुपए, उस पे एक्साइज है 21 रुपए, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है. 530% बढ़ोतरी. और मैं सोच रहा था, क्योंकि आजकल यहां औरंगजेब की बात बड़ी होती है, तो मैं इतिहास को देख रहा था, और इतिहास में मुझे ये पता चला कि एक शख्स जो हमेशा, हाँ जजिया की बात हो रही है, जो अहमद शाह था 1414 में सबसे पहले जजिया उसने लागू किया. उसके बाद अकबर आया, एम्परर अकबर आया, उसने उसको खत्म कर दिया. फिर औरंगजेब आ गया, उसने दोबारा 1679 में लागू कर दिया. और उसने ये कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस पर लागू नहीं होगा. जो गरीब लोग हैं उस पे लागू नहीं होगा. जो हमारी रक्षा करते हैं आर्मी के लोग, उस पे लागू नहीं होगा. ऐसा औरंगजेब ने कहा. और आप बात करते हो औरंगजेब की, ये तो औरंग से भी बदतर बात है कि आपने सब पे लागू कर दिया, वो भी 530% और 203%. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हो? आपको इतना
मालूम नहीं कि जो हमारा गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास भी है, वो जो स्कूटर पे जाता है, जब उसको 95 रुपए 100 रुपए देना पड़ता है, उसको क्या तकलीफ होती होगी। और आप बात करते हो डिजिटल इंडिया की, आप बात करते हो कनेक्टिविटी की, और जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मैं कुछ और बातें आपसे सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं कि वो कनेक्टिविटी के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकें। कितने लोग ऐसे हैं, और मैं आंकड़े आज के दिन आपको नहीं देना चाहता, लेकिन बाय एंड लार्ज देहात में लगभग 6 या 8% लोग होंगे जो कनेक्टिविटी कर पाए। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और आप कह रहे हो कि आप टेलीविजन चैनल्स खोल दोगे, प्रोग्राम बना दोगे। अरे किस झोंपड़ी में टेलीविजन लगेगा, और कहां वो ये सब लेसन्स लगाएंगे। आपको मालूम है, आपका पहले तो मैं वित्त मंत्री जी आपसे कहूंगा कि मेरी एक गुजारिश है, आपकी पार्टी कहेंगे आपको जरा एक इलेक्शन लड़वा दे, फिर आपको पता चलेगा जमीनी हालात क्या है हिंदुस्तान के। और जहां तक मनरेगा सवाल है, आपने उसका देखिए 73,000 करोड़ कर दिया मनरेगा का आपके एलोकेशन, 1,10,000 करोड़ था, उसका 73,000 करोड़ कर दिया, और उसमें आपने लगभग 13,000 करोड़ अभी प्रदेशों को देना है, तो एक्चुअल एलोकेशन केवल 60,000 करोड़। तो आप किस दिशा में जा रहे हो। फिर रही स्वास्थ्य की बात, क्योंकि वही बहुत, जब तक बच्चे का एजुकेशन सही नहीं होगी, स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो हिंदुस्तान की जो संपत्ति है वो आप पैदा कर ही नहीं सकते। आप बच्चों पे ध्यान दो, ये बड़े बड़े लोगों हैं ना, उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको मालूम है कैसे वेल्थ बनाना है, वो आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। वो सुविधाएं उनके पास हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनके बारे में सोचें। Actually, आज मैं सुबह I was reading an article by Ranganathan ji, who's been the ex-governor of the Reserve Bank of India, and he said today that look, what is lacking is gross demand shortage. Unless you put money in the hands of people and they spend, the economy will not move forward. Their purchasing power has to be increased. How do you increase their purchasing power? By reducing Manrega? By not giving them any benefits? Those sectors which have been destroyed by the economy because of the pandemic, you're not at fault at that. You're not at fault at that. इसीलिए आपके प्रधानमंत्री जी को ये जो अमृत काल है उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना वो रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आपके रहनुमा रहेंगे, और ना नफरत के बयान रहेंगे। 2047 तक वो नफरत के बयान भी नहीं रहेंगे। तो आप जरा इस बात पे सोचिए। Please wind up now. In 1 minute, sir. I'll not take more than 1 minute. Don't worry. So the last thing I was talking about was health sector, and I'll just give a few figures and then I'm done. In the health sector, I just want to tell you one thing, that the health expenditure in select countries in 2018, I don't have the figures after that, I'm sure the finance minister will be able to give them. हमारा जो per capita expenditure in health है वो $172 है, per capita expenditure in health, और जर्मनी का है 771, फ्रांस का 485, इटली का 853, साउथ कोरिया का 1044 पर कैपिटा, चाइना का $334। तो अगर हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ का इस हालात, ये जो हालात दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चे का ना तो स्वास्थ्य ठीक होगा, ना उसकी शिक्षा ठीक होगी, तो वेल्थ आप अडानी अंबानी से बनवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Kapil Sibal ji. Now, Sushil Modi ji. माननीय उपसभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी has passed from JNU. She does not have a degree from Harvard Business School. जो डिग्री चिदम्बरम साहब के पास थी,
लेकिन मैं कह सकता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था और टेपर टेंटम 2012-13 के समय में जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था, शी हैज प्रेजेंटेड 100 times better budget in such adverse conditions. अब सती महोदय, स्पेनिश फ्लू आया था 17-18 में, 1.5 करोड़ लोग मरे थे भारत के अंदर। भारत की आबादी थी 30 करोड़ और 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। और सती महोदय, इस कोविड काल में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भारत में मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। लेकिन उपसभापति महोदय, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, which is 1/4 of India, and 9,26,000 people died in America. Brazil has a population of only 21 crore, which is 1/7 of India, and 6,32,000 people died. Russia's population is 1/10 of India, and 3,35,000 people died in Russia. In UK, which is a 20 times less population than India, and 2 lakh people died in UK. सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता और फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस का सहयोग नहीं होता, तो देश में 5 लाख नहीं 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए होते। सोचते 50 लाख से ज्यादा। हमारे पास तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्राजील जैसी और हेल्थ की सुविधा नहीं है, फिर भी हमने इस देश के 40-45 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। और नहीं तो सती महोदय, क्या होता ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में देश का नेतृत्व प्रदान किया। आप मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग फेल कर गए। श्रीमती महोदय, भारत में अब तक 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 170 करोड़, अमेरिका में 53 करोड़, ब्राजील में 36, जर्मनी में 16, रशिया में 15, यूके में 13। और सती महोदय, ये जो वैक्सीन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, और सती महोदय आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने वैक्सीन भारत में अगर नहीं बनी होती तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको दुनिया के सामने जाकर भीख मांगनी पड़ती कि हमको वैक्सीन दीजिए, और वर्षों लग जाते तो भी हम देश के 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते। सती महोदय, हमने कोविन का टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, QR कोडेड सर्टिफाइड हमने लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, 1 लाख कोल्ड चेन स्थापित किया, और लास्ट माइल डिलीवरी तक हमने और वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। अब सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दुनिया में केवल 7 देश हैं जो वैक्सीन पैदा करते हैं। USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, रशिया, कनाडा, केवल 7 देश। और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या हाल है? केवल 16% लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और केवल 11% लोगों को सेकेंड डोज लगा है। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल एंड अदर असिस्टेंस देने का काम किया है। और सती महोदय, 28 जनवरी तक हमने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को 14 करोड़ 63 लाख डोजेस वैक्सीन मुफ्त में देने का या कॉमर्शियल एक्सपोर्ट करने का काम किया है। और महोदय, जिस भारत ने कोविड काल में, और ये नरेंद्र मोदी है जो कभी विचलित नहीं होते विपरीत परिस्थितियों में, और दिनकर ने ठीक ही कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। तो श्रीमती महोदय, पिछले कोरोना काल के अंदर
भारत ने जिस तरह से मुकाबला किया है, सती महोदय, मैं कल से भाषण सुन रहा हूं कांग्रेस के नेताओं का, पता नहीं उन्होंने अपने 50 साल में कितने रोजगार पैदा किए, लेकिन सती महोदय इस बजट का अगर कोई एक फोकस है तो दैट इज जॉब जॉब जॉब, रोजगार रोजगार रोजगार। इसके हर एक पन्ने पर रोजगार लिखा है, इसके हर एक पन्ने से रोजगार पैदा होता है। सती महोदय, हम ऐसा विकास देश को दे रहे हैं जो रोजगार पैदा करने वाला विकास है, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। सती महोदय, रोजगार लोगों को डोल देने से पैदा नहीं होता है, कैश ट्रांसफर देने से, इनकम सपोर्ट से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी इनकम सपोर्ट दिया है, हमने भी लोगों को मदद की कोरोना काल में, लेकिन सती महोदय अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से। और सती महोदय, किसी ने ठीक ही कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ हम पिछले 4 साल में, इस साल को मिलाकर केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने जा रही है, खर्च कर चुके हैं। आज तक आजाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस साल के बजट में 35% ग्रोथ, 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़, द आउटलेज हैज बीन इंक्रीज बाय 35%। और कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अगर उसको जोड़ दें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10,68,000 करोड़, विच इज 4.1% ऑफ जीडीपी। और सती महोदय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इफ यू एड 100 rupees, if revenue expenditure increases by 100 rupees, then only 98 rupees is added to the economy. But if you spend 100 rupees as a capital expenditure, 245 rupees is added to the economy in the same year, और बाद के वर्षों में 480 रुपया और इकोनॉमी के अंदर ऐड होता है। सरस्वती महोदय, हमने हर चीज को और इसके साथ जोड़ा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई साइड को भी देखेगा। इट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, ह्यूज जॉब क्रिएशन, स्किल्ड टेक्नीशियन, सीमेंट, स्टील, सैंड, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और इतना ही नहीं सोती महोदय, सिब्बल साहब तो कभी तो राज्यों से संबंध रहा नहीं, 1 लाख करोड़ हमने राज्यों को दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एंड 50 लाख 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन। आज तो पता है कांग्रेस ने कभी राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया था कभी सती महोदय? और सती महोदय, रोड के सेक्टर में we will be spending 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector, and we will be building 25,000 national highways in the year 2023. और एक बात और बताना चाहूंगा, इस बार के रोड के बजट में हमने कोई बोरोइंग नहीं की है। इसके पहले 65,000 करोड़ हमने बोरोइंग की थी नेशनल हाईवे के लिए, एंड दिस ईयर वी हैव सपोर्टेड द नेशनल हाईवे विद द बजटरी सपोर्ट। दे विल नॉट बी टेकिंग एज अ सिंगल पेनी एज ए बोरोइंग। और सती महोदय, इसलिए केवल रोड सेक्टर नहीं, हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर 1,52,000 करोड़, रेलवे के अंदर 1,37,000 करोड़, टेलीकॉम में 54,150 करोड़, मेट्रो पर 19,130 करोड़, एटॉमिक एनर्जी पर 1.9% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सती महोदय, अगर ये रोजगार पैदा अगर इससे नहीं हो तो किससे रोजगार पैदा होगा? आप ही बता दीजिए कि रोजगार कैसे पैदा होता है। सती महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 14,000 करोड़ बजट था 21-22 का, दिस हैज बीन इंक्रीज 27% इंक्रीज इन द पीएम ग्राम सड़क योजना टू 19,000 करोड़। और ये नल जल योजना, क्या ग्राम सड़क योजना से रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या नल जल योजना से अगर हम 3.8 करोड़ घरों में अगर हम 60,000 करोड़ खर्च कर अगर हम टैप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे तो क्या जॉब क्रिएट नहीं होगा? अगर 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए अगर हम 48,000 करोड़ पैदा खर्च कर रहे हैं तो क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? सती महोदय, मुझे बहुत हंसी भी आती है और
दुख भी होता है कि चिदम्बरम साहब और कपिल साहब जैसे लोग आरई को 20 से तुलना कर रहे हैं। दे आर कंपेयरिंग रेवेन्यू, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट विद बजट एस्टिमेट। अरे चिदम्बरम साहब, इतना तो आपको मालूम है, आप तो इतने बार वित्त मंत्री रहे कि हमेशा बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करते। अगर मनरेगा में पिछले बार 72,000 करोड़ था और बाद में हमने इंक्रीज किया, इस बार भी बजट में उतना ही रखा जो पिछले बार था। So now you are comparing budget estimate of 2023 with the revised estimate of 21-22, Savati Mahoday. और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़, सती महोदय 20 से 25 तक 111 लाख करोड़ we will be spending on national infrastructure pipeline, world class infrastructure. और सती महोदय इतना ही नहीं तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, ये क्या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक. The projects pertaining to these 7 engines of growth in the NIP will be aligned with PM Gati Shakti program. PM Gati Shakti और NIP, उन दोनों का अलाइन किया गया. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट. और सती महोदय, आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. सती महोदय, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स में एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन विल बी अगले 5 साल में हम पैदा करेंगे. और 3,46,000 करोड़ विल बी स्पेंड एज अ सब्सिडी इंसेंटिव टू द इंडस्ट्रीज इन 14 सेक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं एज ए इंसेंटिव. सोलर, हमारे देश के अंदर सोलर पीवीज नहीं है. सोलर जो मॉड्यूल, जो सोलर प्लेट्स होती हैं, उनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है. मैं निर्मला जी और पीएम को धन्यवाद दूंगा. दिस ईयर शी हैज इंक्रीज फ्रॉम 4,500 to 19,000, एडिशनल 19,500 करोड़ for manufacturing of solar panels. और सती महोदय, 280 gigawatt of installed solar capacity by the year 2030. सोलर कैपेसिटी 280 मेगावाट नहीं, 280 गीगावाट हम 2030 तक इस देश के अंदर और पैदा करेंगे. इसलिए सती महोदय, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, फार्मा हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल्स हो, व्हाइट गुड्स हो, ड्रोन्स हो, इस पर हम इतनी बड़ी राशि खर्चा करने जा रहे हैं. और अब कहते हैं कि रोजगार कहां से पैदा होगा? सती महोदय, नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उनको मालूम है, इसे किसी ने कहा हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है. हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है. हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा. हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा. अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर नरेंद्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो आसमान को. जितना ऊंचा कर सकते हो आसमान को करो, आसमान को. हम अपना हुनर दिखाएंगे. सती महोदय, ये जमाना मेटावर्स का है, वेब 3 का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. और कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा? कपिल सिब्बल साहब, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत बोलिए. डिजिटल करेंसी, दुनिया में अभी तक केवल 9 देश है जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है. एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नेशन आइलैंड्स. बहामास छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख होगी, उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है. इंडिया विल बी द 10th कंट्री इन दिस वर्ल्ड which will be launching digital currency. इससे transparency in transaction, reducing use of black money, cheaper currency management, online payment more secure and risk free, interbank settlement not required. और सती महोदय, हैंडलिंग, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश. और आप इसका मजाक उड़ा रहे. सती महोदय, डिजिटाइजेशन, क्या बिना डिजिटल वर्ल्ड के क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं दुनिया की प्रगति की दौड़ के अंदर? बजट में घोषणा की गई है 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित किया जाएगा. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर 2025 तक
देश के सभी गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इसके टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, विच विल क्रिएट 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल जिसके अंदर है। किसान ड्रोन्स, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो यादव जी, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, गवर्नमेंट विल यूज दीज थिंग्स, और जो प्रगतिशील किसान होंगे वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कपिल साहब कि चैनल से क्या होगा, आपको पता ही नहीं, आप तो कभी गांव में गए नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, हर एक भी देश का गरीब नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची होगी। और आप कहते हैं कि टीवी नहीं है। सती महोदय, 2 करोड़ बच्चे केवल बिहार के अंदर स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय कि क्लास 1 से क्लास 12 तक, 12 के बजाय 200 चैनल्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सती महोदय, ये पोस्ट ऑफिस कल तक केवल लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करते थे। अभी तक 20,000 पोस्ट ऑफिस has been converted into core banking, and government has decided in the coming years more than 1,50,000 post office will be converted into core banking. डिजिटल पेमेंट को सरकार प्रमोट करेगी, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी। और महोदय, जब इतना डेटा पैदा होगा, डेटा का एक्सप्लोजन होगा, तो हमको डेटा सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो सरकार ने यह भी तय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं उनको प्रोक्योरमेंट के लिए 75% उनका जो बिल है विल बी पेड विद इन से 10 डेज। और ये ई बिल सिस्टम होगा, एवरीथिंग विल सबमिटेड ऑनलाइन, डिजिटली साइन बिल्स। इसलिए सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी है जो मुश्किलों से भागते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है, पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है। तो महोदय, हम टेलीकॉम, अभी तो सिब्बल साहब टेलीकॉम मंत्री थे शायद, 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल ऑक्शन हो जाएगा और साल के अंत होते होते हम 5G लॉन्च कर देंगे। एंड सती महोदय, you know the speed of 5G, it will be having a speed of 10,000 to 30,000 megabyte per second, 10,000 to 30,000 megabyte per second। और 4G की स्पीड कितनी है? 100 to 300 megabyte per second। और सती महोदय, इतना ही नहीं, 5G के ऑक्शन से 1 लाख करोड़ मिलेगा। और हम लोगों ने टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज घोषणा की थी सितंबर 21 में, जिससे 30,000 करोड़ फाइनेंशियल 2023 के अंदर इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू उसको इंक्रीज होगा। सती महोदय, BSNL को हमने 2019 में पैकेज दिया था। BSNL को 45,000 करोड़ का कैपिटल हम लोगों ने आउटले प्रोवाइड किया है। और सती महोदय, हम BSNL को भी इस साल 4G में कन्वर्ट करेंगे। और सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हम केवल 5G नहीं ला रहे हैं, आज ही मीटिंग है कि 6G, यानी भारत अभी से 6G की तैयारी कर रहा है। तो 6G का स्टैंडर्ड क्या होगा? और सती महोदय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सती महोदय, क्यूमुलेटिव, अभी तक पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 21 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ अभी तक हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बेनिफिशियरीज के खाते में पहुंचा चुके हैं। और मालूम है सरकार सर कितना सेविंग हुआ है? 2,22,000 करोड़ सेविंग हुई है। 2,22,000 करोड़ की बचत हुई है भारत सरकार को केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। 4 करोड़ डुप्लीकेट रेशन कार्ड रद्द कर दिए गए, 4 करोड़ से ज्यादा LPG के फेक कनेक्शन खत्म कर दिए गए, 120 लाख मैट्रिक टन रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सेल में मदद मिली है। और सती महोदय, मोबाइल फोन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो केवल 2 इकाई थी, 2 यूनिट थी मोबाइल फोन की। और आज मुझे बताते हुए खुशी है 2021 में 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर इन इंडिया। और जहां 14-15 में हम 6 करोड़ मोबाइल तैयार कर रहे थे,
2021 में we have manufactured more than 30 crore of mobile phones in this country itself. और सत्यम महोदय, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 3,874 करोड़ हमने ट्रांजैक्शन किया एक साल के अंदर यूपीआई के द्वारा, और जिसका वैल्यू है 72 लाख करोड़। और महोदय, स्टार्टअप्स का जिक्र कल कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, सर यूनिकॉर्न कहते हैं उसको जिसका वैल्यू 7,000 करोड़ से ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज ए यूनिकॉर्न। और मैं सदन को बताना चाहूंगा, द ईयर 2021 ड्यूरिंग पेंडेमिक 44 स्टार्टअप्स हैव रीच्ड द स्टेटस ऑफ यूनिकॉर्न इन अ सिंगल ईयर। और इतना ही नहीं तो जनवरी 14, 2021 तक 83 यूनिकॉर्न्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ $277 बिलियन, यानी 83 यूनिकॉर्न्स, उन्होंने 7,000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू इनका हो चुका है। और आज इंडिया यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर, और यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स के अंदर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी 5,50,000 crore were invested by venture capitals and private equity in the startup ecosystem, which is one of the largest in this world. सत्य महोदय, जो सरकार इतना काम कर रही है और आप कर रहे हैं, सत्य महोदय, किसी ने कहा है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। सत्य महोदय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वर्ल्ड में हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज इंडिया के पास, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास है। एफडीआई, वी हैव द हाईएस्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एफडीआई इनफ्लो, ये कोविड डिस्ट्रप्शन के बाद हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो इन दिस कंट्री। सती महोदय, एक्सपोर्ट्स 300 बिलियन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज का हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम 400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करेंगे। सती महोदय, इतना ही नहीं, और जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,000 करोड़, और पेंडेमिक के बावजूद हमने जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन किया। सती महोदय, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, मैं सदन को बताना चाहूंगा 86 लाख लोगों ने अभी तक उड़ान का इस्तेमाल किया है। अगर उड़ान नहीं होता तो ये गरीब चप्पल वाले लोग और उड़ान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सती महोदय, आईपीओस, वाइंड अप कीजिए, 2 मिनट के आईपीओस। सती महोदय, 21-22 में सो फार 89,066 करोड़ has been raised by 750 IPOs, 75 IPOs ने एक साल के अंदर कोविड के बावजूद, और 89,000 करोड़ जो पिछले 10 साल का हाईएस्ट है। और सत्य महोदय, अंत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है 25 जनवरी को, एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज ऑन 25 जनवरी बाय IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कहता है India's real GDP is projected to grow at 9% both in 21-22 and 22-23 and 7.1% in 23-24. This project, India is the fastest growing major economy in the world in all the 3 years. अगले 3 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाले देशों के अंदर होगा। अंत में सती महोदय, गरीबों की बात करते हैं, इंडिया टुडे, 1 मिनट और सती महोदय, 1 मिनट केवल। सती महोदय, इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये इंडिया टुडे मैगजीन का सर्वे है, और वो कहते हैं कि 68% लोग दे आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पेंडेमिक के बावजूद। 1 मिनट केवल सती महोदय, 1 मिनट केवल। और इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, उसने सर्वे किया 4 दिन पहले, मिंट में आया है, नमो की पॉपुलैरिटी 72%,
मेक्सिको के प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी 64%, इटालियन पीएम 57%, जापान 47 एंड जो बिडेन केवल 41% है। और अंत में सभापति महोदय, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती है, लहरों को, वेव्स को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। धन्यवाद। लहरों को साहिल की दरकार आप कंक्लूड कीजिए, नहीं होती। सुनने की जरूरत नहीं है, आप कंक्लूड कीजिए। हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जी शब्दों के साथ मैं निर्मला जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज दोला सेन। Ms. Dola Sen, you have 5 minutes. We have 40 times 10 minutes. Another speaker has already spoken about it. Please, now you start. 5 minutes or 10 minutes, sir? आप शुरू कीजिए। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। Thank you, Chairman sir, for giving me the chance to speak on budget 22-23. हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत दिन बाद, एटलीस्ट 3-4 सेशन के बाद, हम सब राज्यसभा से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर